निर्माण हुआ है। और विद द पॉपुलेशन 25 करोड़ की जनता, लेडीज एंड जेंटलमैन, और 25 करोड़ के जनजाति वाला बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हमारे रहूंगा। एंड यस, विद ऑल योर राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा 2021 में एवं प्रतिभाग बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड मिल चुका है मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म जी, जिनको फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं और ऑनरी डॉक्टरेट हैं मालिनी जी, और इंडियन लेडीज एंड जेंटलमैन, और बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित लोकसभा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये काफी सारे जी जो हमने कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी, भोजपुरी फिल्म, he's a singer, he's an actor, he's a producer, and honorable member of parliament. मैं पुनः सभी भाइयों बंधुओं का, फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तहे दिल से आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से, हमारे सीएम सर की ओर से आप सबका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ टू द सेशन ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। Media and entertainment, the Indian digital story, ladies and gentlemen. इंडिया एक नए इंडिया का नया ग्रोथ इंजन कहा गया है उत्तर प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि मैंने कहा, अप इन ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्री तो अप ही जा रहा है, और काफी सारे निवेश अक्रॉस द ग्लोब, और मीडिया एंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्री से डेफिनेटली बहुत ही ऊंचाई मिलेगी, चाहे निवेशक को हो, चाहे इंटरेस्ट के तौर पे हो, या फिर आप इनको जो रोजगार के तौर पे हो। और इनफैक्ट नोएडा फिल्म सिटी, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि मैंने कहा कि मीडिया एंटरटेनमेंट और फिल्म जगत का हब बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश को। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म सिटी का निर्माण शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। परियोजना के मुताबिक 2032 तक 3 चरणों में पूरा किया जाएगा, और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित 21वें सेक्टर में यमुना एक्सप्रेसवे की 1000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1000 एकड़ भूमि पर आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी जगह पे अगर फिल्म इंडस्ट्री आती है तो कितनी रोजगार, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो रोजगार टू ईच एंड एवरीबॉडी, राइट फ्रॉम द केटरिंग टू द टेंट गाइज, टू द डेकोरेशन गाइज, टू द स्पॉट पीपल, सबको बहुत सारे यहाँ पे रोजगार के अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं। 1000 एकड़ भूमि में जो 220 एकड़ भूमि बहुत सारी फिल्में हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में शूट, हमारे मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस डेलीगेट्स, सबका पुनः स्वागत करती हूँ आप सबका। उत्तर प्रदेश जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि, जहाँ विश्व का 7वां जुड़ा ताजमहल भी है, और गंगा यमुना सरस्वती का संगम भी है, ऐसी पुण्य भूमि कि जहाँ पे कृष्ण जी को भी माना जाता है, और खूबसूरती के साथ हम लोग सभी रिलीजन के हिसाब से अगर हम राज्य देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कई सारी संभावनाएं और लोक कल्याण की भावना को अगर बहुत स्वागत करते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, मैं विनती करूंगी श्री जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए एवरीबॉडी प्लीज। श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं प्लीज रिक्वेस्ट श्री संजय प्रसाद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, टू वेलकम
And to give the floor, welcome to Shri Anurag Singh Thakur Ji, Honorable Minister, Government of India. फ्लावर वेलकम करेंगे, अतिथियों का स्वागत करेंगे. Ladies and gentlemen, Minister of Government of India. Shri Sanjay Ji, please. So that's everybody. Shri Sanjay Prasad Ji, Principal Secretary CM, Principal Secretary Information, Principal Secretary Home. तो फ्लावर वेलकम कर रहे हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और मैं विनती करूंगी श्री शिशिर जी से पद्मश्री मती हेमा मालिनी जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ड्रीम गर्ल, इनका स्वागत करें हम. श्री शिशिर जी, एक शॉल वाला भी हम स्वागत करना चाहेंगे श्री अनुराग जी का. मैं विनती करूंगी सर से आप स्वागत करें श्री रवि किशन जी का, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेल रिनाउंड एक्टर. बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन. अनुराग जी एक शॉल बना के उनका सम्मान अदा कर रहे हैं. और मैं विनती करूंगी सर से आप स्वागत करें जी को. विनती करूंगी इस आगे श्री आशुतोष शुक्ला जी, श्री कोमल नाथा जी, श्री केसी बुकारिया जी, श्री अमरीश कुमार अवस्थी जी, श्री अमरीश अवस्थी जी, श्री रघु किशन जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्टर, श्री सतीश कौशिक जी, श्री मधुर भंडारकर जी, डायरेक्टर सर, श्री आशुतोष शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इट. माननीय मंत्री जी श्री बलदेव गौड़ा जी को हम शॉल लाके का स्वागत करना चाहेंगे. सुमंदर जी का भी स्वागत करना चाहेंगे. रिक्वेस्ट करते हैं सर प्लीज वेलकम मैम. थोड़ा गाना हो जाए. थैंक यू सो मच. एंड ये जजमेंट अब बिना समय गंवाए मैं विनती करूंगी श्री अमरीश कुमार अवस्थी जी, एडवाइजर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी, वे आके इसके बारे में बताएं इस सेशन में. आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आदरणीय मैडम हेमा मालिनी जी, हमारी अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे मथुरा की मैडम मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे अपने श्री रवि किशन जी, गोरखपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे अपने प्रदेश के साथी श्री सतीश कौशिक साहब, श्री मधुर भंडारकर साहब, श्री कोमल नाहटा जी, श्री केसी बुकारिया साहब, एवं यहाँ बैठे मेरे सहयोगी संजय प्रसाद जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम एज वेल एज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और शिशिर जी जो हमारे डायरेक्टर इंफॉर्मेशन है. यहाँ हमारे माननीय मंत्री श्री गिरीश यादव जी, हमारे माननीय मंत्री जी श्री औलाद साहब, हमारे मेंबर ऑफ विधानसभा, यहाँ आए हुए सभी इन्वेस्टर्स, यहाँ आए हुए सभी फिल्म से जुड़े हुए सभी पर्सनालिटी, यहाँ आए हुए सभी हमारे प्रेस के भी साथीगण जो आज इस पूरे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, और हमारे दूर दूर से आए हुए हमारे सभी सहयोगीगण. उत्तर प्रदेश का स्थान जहां तक फिल्म का सवाल है तो निश्चय ही पूरे फिल्म के इतिहास में अगर आप देखें तो सिनेमा के इतिहास में उत्तर प्रदेश का स्थान हर तरह से सबसे महत्वपूर्ण रहा है. चाहे फिल्म निर्माता हो, निदेशक हो, कलाकार हो, गीतकार हो, संगीतकार हो या पटकथाकार हो, सभी ने उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं उनका ओरिजिन रहा है. और जाकर बॉलीवुड में और अन्य प्रदेशों में भी उन्होंने
एक अच्छा कार्य किया है। इसी कड़ी में आज यहाँ जो ये फिल्म का सेशन हुआ है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सर, पूरे हम लोगों के अपने करियर में जो ये 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन हमारे इन्वेस्टर समिट का किया है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, हम लोगों ने अपने पूरे कार्यकाल में इतना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम नहीं देखा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंच से जो है अपनी ओर से एक सांसद होने के नाते सबका स्वागत किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मेहनत से पूरी रूपरेखा को तैयार किया है। मैं इन्वेस्टर समिट के आधार पर यहाँ पर पूरे प्रदेश की, पूरे सरकार की ओर से और यहाँ पर इस विभाग की ओर से मैं आप सबका मंच पर सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। मुझे बहुत संक्षिप्त में जो है केवल इतना कहना है कि हमारी जो फिल्म की जो पूरी पॉलिसी है वो बहुत मजबूती से लागू की गई है। सर, हमारे फिल्म की पॉलिसी में लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक जो है हम लोग सब्सिडी जो है दे रहे हैं। हमारी फिल्म की पॉलिसी में न केवल हिंदी फिल्म, इंग्लिश फिल्म, जो रीजनल फिल्म्स हैं, और अगर ओसीआई विदेशों में जो है से आकर यहाँ ट्रिनिडाद से या मॉरिशस से या कहीं से भी आते हैं, उनके लिए भी जो है हम लोग फिल्म्स के लिए अगर यूपी में तैयार करते हैं तो उसके लिए पूरा जो है सहयोग और कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं। मैं अपनी ओर से ये भी आपको बताना चाहूंगा कि फिल्म्स के साथ साथ हम यहाँ पर लैब्स के लिए, प्रोसेसिंग के लिए अनुदान दे रहे हैं। फिल्म्स के साथ साथ फिल्म सिटी बनाने के लिए हम अपना अनुदान दे रहे हैं और इसके साथ साथ फिल्म्स के प्रशिक्षण के लिए भी, जो भी हमारे कलाकार और टेक्निकल ट्रेनिंग का प्रशिक्षण होता है, उसके लिए भी हम अपना जो है अनुदान की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा सर कि अभी रोड शो में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों को जो है मुंबई जाने का मौका मिला। निरहुआ जी, मैंने अभी देखा नहीं था, निरहुआ जी, रवि किशन जी वहां मौजूद थे और वहां फिल्म के रोड शो में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक बिंदु जो है वेब सीरीज का और ओटीटी प्लेटफॉर्म का भी रखा गया कि उनको भी अनुदानित किया जाए। मुझे बताने में ये खुशी है कि विभाग बहुत जल्दी ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो भी वेब सीरीज आ रही है या फिल्म्स आ रही है, उनको भी अनुदान जो है उत्तर प्रदेश सरकार, यदि उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है तो वो प्रदान करेंगी। सर, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो हमारी पूरी रूपरेखा है, इसको और मजबूत करने के लिए 1000 एकड़ की फिल्म सिटी का निर्माण यमुना एक्सप्रेसवे में प्रस्तावित किया गया है। अभी इस समय इसकी बिड ओपन है और लगभग 1000 एकड़ के लिए जो हमें अंदाजा है, लगभग 14 तारीख को जो क्लोजिंग है, कुछ 2 या 3 प्रस्ताव जल्दी ही आने वाले हैं। अगर ये 1000 एकड़ का हमारा फिल्म सिटी का जो है शुभारंभ हो जाता है निश्चय ही अगले 1 या 2 महीने में, तो ये पूरे नॉर्थ इंडिया की रूपरेखा ही बदल देगी और इस फिल्म सिटी के माध्यम से अलग अलग एरियाज में इन्वेस्टमेंट आएंगे, विदेशों से भी इन्वेस्टमेंट आएंगे और हमारे जो नामी ग्रामी कलाकार हैं उनको भी इसमें जो है सहयोगी किसी न किसी रूप में रखा जाएगा। आपको मालूम है कि प्रदेश हमारा मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट रहा है। सर, आपकी मिनिस्ट्री से हम लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हुए हैं। इसके साथ साथ हमारा एक बार पुनः स्पेशल अवार्ड भी फिल्म फ्रेंडली स्टेट का हमें मिला है। गोवा फिल्म फेस्टिवल में हम लोगों ने भी भाग लिया था, वहां पर भी हमको मोस्ट फिल्म शूटिंग फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड अभी शीघ्र ही 2021 में मिला है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अवार्ड्स के साथ साथ हम लोगों ने जितने फिल्मों का रजिस्ट्रेशन किया है, लगभग 495 फिल्म्स का अब तक हम रजिस्ट्रेशन अपनी फिल्म पॉलिसी में कर चुके हैं, जिसमें से 341 की जो हम पटकथा है उसका अप्रूवल कर चुके हैं एंड 80 फिल्मों को 44 करोड़ रुपए अभी तक जो है हम पिछले कुछ 2 साल में दे पाए हैं और आगे भी आने वाले समय में बहुत तेजी से काम मिलेगा। सर, मुंबई में जब हम लोग गए तो वहां जितनी फिल्म फ्रेटर्निटी थी उनका केवल एक ही पॉइंट कहना था कि यूपी में अगर कहीं भी फिल्म का निर्माण हो रहा, शूटिंग हो रही,
कहीं पुलिस की कहीं भी प्रशासनिक रूप से दिक्कत नहीं आती है। ये एक बहुत बड़ा जो है यहाँ का प्लस पॉइंट है और इसी कड़ी में पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर जो है फिल्मों का निर्माण हो रहा है। मैं पुनः इस अवसर पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे टूरिज्म में एक नारा है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, और उसी रूप में आज इन्वेस्टमेंट में हम लोग कह रहे हैं कि अगर यूपी में इन्वेस्ट नहीं किया तो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया, देश में इन्वेस्ट नहीं किया। मैं पुनः इस अवसर पर आप जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हमारे फिल्म पॉलिसी के बेसिस पर प्रस्तावित किया गया है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, छोटे बड़े फिल्म सिटी के निर्माण प्राइवेट सेक्टर में भी आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से भी सर जो भी सहयोग हम लोगों को मिलेगा प्रदेश में, हम आपका सहयोग प्राप्त करेंगे और आपकी मिनिस्ट्री के माध्यम से आपके मार्गदर्शन में हम अपने प्रदेश को न केवल इस सेक्टर में आगे बढ़ाएंगे लेकिन हर सेक्टर में फिल्म, मीडिया और जो भी हमारे वेब सीरीज हैं उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मैं पुनः इस अवसर पर मैडम हेमा मालिनी जी का, रवि किशन जी का, निरहुआ जी का, मधु भंडारकर साहब का, सतीश कौशिक साहब का, केसी बुखाड़िया साहब का, कोमल नाहटा साहब का और आशुतोष शुक्ला जी जो अपने जागरण के यहाँ पूरे प्रदेश के प्रभारी हैं, उनका विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और पुनः अपने प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी की ओर से, शिशिर और उनके रीजनल डायरेक्टर और पूरी टीम और मिस्टर दिनेश सहगल की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि फिल्म के लिए हम हर संभव पूरा प्रयास करेंगे और एक इंटरनेशनल लेवल की टेक्नोलॉजी प्रदेश में लाकर उसको आगे बढ़ाएंगे। फिर से पुनः यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, यूपी में इन्वेस्ट नहीं किया तो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया। इस पूरे अभियान में आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं विनती करूंगी हमारे लोकप्रिय एक्टर, सिंगर जिन्होंने कई फिल्मों में ऐसी अदाकारा दी हैं एक्टिंग के माध्यम से, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा गोरखपुर से श्री रवि किशन जी। आप सभी लोग को प्रणाम। मीडिया बंधुओं का स्वागत। इस ऐतिहासिक पल जहां पर हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, इनका स्नेह, इनका प्रेम, इनका आशीर्वाद और इनका प्रोत्साहन अक्सर मुझे पर्सनली भी मिलता है, फिल्म इंडस्ट्री को भी मिलता है। बहुत क्रिएटिव कोई भी थॉट्स लेके मैं इनके पास जाता हूँ तो उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज किया, मैं उसको और उसके लिए आपको सर धन्यवाद देता हूँ। एंड दैट्स अमेजिंग, नेवर डिस्करेज मी, यू ऑलवेज, यू नो, आप हमेशा फिल्म इंडस्ट्री के लिए खड़े रहते हैं। अभी जिनकी बातों को, आज जिन्होंने अपनी सारी बातों को कम शब्दों में कह दिया, वैसे श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, एडवाइजर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू जी महाराज जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। श्री सतीश कौशिक जी, और जिनको पूरा देश, पूरा विश्व ड्रीम गर्ल के नाम से जानता है, पार्लियामेंट में हमेशा हमारे सदन में हमको कुछ न कुछ सुंदरता के साथ बातें सिखाते रहती हैं। ऐसी हमारी सीनियर कलाकार और बहुत ही सम्माननीय पद्मश्री श्री हेमा मालिनी जी, श्री मधु भंडारकर जी मेरे मित्र, जिनके साथ मैंने फिल्मान की थी, सतीश कौशिक जी के साथ मैंने तेरे नाम फिल्म की थी सलमान खान वाली, केसी बुखाड़िया जी गोरी है कलाइयाँ के जो गाना इनका बड़ा हिट हुआ था, तो ये ऐसे बड़े दिग्गज निर्माता हैं। और हमारे साथ कोमल नाहटा जी, जिनको अक्सर आप देखें कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए एकदम एक कवच के रूप में खड़े रहते हैं और आपके डिबेट अभी अक्सर बहुत चर्चा में रही है। आपको भी मेरे छोटे भाई आजमगढ़ से भी सांसद बने माननीय दिनेश यादव निरोहा जी, उनका स्वागत है। शुक्ला जी जो यहाँ पर हमारे एडिटर हैं दैनिक जागरण के, उनका स्वागत है। और हाँ, गिरीश जी भैया, गिरीश जी का स्वागत था। तो सब लोगों के स्वागत, और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की ये सोच और नया भारत है, उसके साथ नया उत्तर प्रदेश जो बन रहा है पूज्य महाराज जी की डबल इंजन की सरकार,
तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच निरंतर 20 घंटे काम करना, निस्वार्थ सेवा करना, वही भाव से पूज्य महाराज जी भी काम कर रहे हैं। और आज फिल्म फर्टिलिटी के लिए पूज्य महाराज जी जैसे मुंबई में आए और एक मीटिंग किए, और उसके बाद आपने देखा है कि आगाज हुआ, बहुत बदलाव आया लोगों में, उनसे कुछ सवाल भी किए गए वहां पर, तो उसका उन्होंने इतने प्रेम से जवाब दिया, जिससे ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी फिल्म इंडस्ट्री के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सोच व्यवसाय रोजगार देने वालों के साथ है। और वहां से पूरे देश ने एक अलग करवट ली। उसके बाद की फिल्म का आपने ओपनिंग देख लिया, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश आया, उससे ये बात एकदम साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी विकास में बिलीव करती है, भारतीय जनता पार्टी रोजगार में बिलीव करती है। 1000 एकड़ की जमीन लेके पूज्य महाराज जी ने अभी जो सोच की है कि एशिया की द बिगेस्ट फिल्म सिटी वी आर गोइंग टू मेक, द लार्जेस्ट फिल्म सिटी, जहां पे हर भाषा के लोग होंगे, वहां हिंदी फिल्में भी होगी, वहां पर भोजपुरी भी होंगी, तो मराठी भी होगी, तमिल तेलुगु कन्नड़ा भी होगी, मलयालम फिल्में भी होंगी, वेब सीरीज भी होंगी। एक ऐतिहासिक जमीन एक्वायर कर लिया गया, जैसे अवनीश जी ने आपको बताया। निवेश के लिए भी अभी मुंबई में गए थे, हमको महाराज जी के सामने भूषण कुमार जी टी सीरीज से आए थे, उन्होंने भी और कई हजार करोड़ के निवेश के लिए बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसर्स और इन्वेस्टर्स ने वहां पर महाराज जी को पूरा सपोर्ट किया। तो वी आर कंप्लीटली रेडी। आप लोगों को इस मंच के माध्यम से मैं समस्त सिनेमा जगत जो इस वक्त मुझे मीडिया के माध्यम से सुन रहा है पूरे भारत में, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं कि कृपया आप लोग आए। हिंदी हार्टलैंड, हिंदी फिल्में बनती हैं हिंदी हार्टलैंड पे, और यहाँ की जितनी फिल्में आप लोग देख रहे हैं बन रही है, वेब सीरीज या भोजपुरी फिल्में या तमिल या रजनीकांत सर यहाँ आते हैं, यहाँ पर जितने तेलुगु के सुपरस्टार आते हैं शूटिंग करते हैं, वो फिल्मों का लुक कैसा आप लोग जान ही रहे हैं। टूरिज्म से, पर्यटन से आपने देखा गोवा से ज्यादा टूरिज्म इस साल में पाया गया वाराणसी काशी में। उत्तर प्रदेश इतना सुंदर हो गया, भव्य हो गया हर तरीके से। और सबसे सुंदर बात है जो कलाकारों को, चूंकि मैं खुद कलाकार हूं तो मैं जानता हूं कि कलाकार को एक बात हमेशा डर लगती है कि क्या मेरी सुरक्षा रहेगी कि नहीं, जो कि पूज्य महाराज ने इस बात को पूरी तरह से एकदम साबित कर दिया कि यहाँ पर आइए, पुलिस प्रशासन आपकी पूरी सुरक्षा करता है। और सब लोग आज प्रसन्नता से यहाँ पर लखनऊ में इस वक्त अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ 6-7 फिल्मों की शूटिंग हो रही है, गोरखपुर में शूटिंग हो रही है, बनारस में हो रही है, करीबन 80 से 100 फिल्मों की शूटिंग इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रही है हर भाषा की। तो ये अचीव किया है इस सरकार ने, पूज्य महाराज जी की उनकी सोच ने, विचार ने। इसी तरह मैं समस्त मीडिया जगत के द्वारा, मैं फिल्म इंडस्ट्री के जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने मेरे कलीग्स हैं, कि कृपया आप लोग उत्तर प्रदेश आए। सब्सिडी के साथ साथ आपको 1 विंडो क्लियरेंस है, आपको सारी सुविधाएं हैं, आपकी कहानी के अनुसार बड़े बड़े और सारी लोकेशंस हैं। हम लोग जेवर स्टूडियो फिल्म सिटी भी, महाराज जी का पूरा प्लान है कि 24 के पहले उसकी शुरुआत कर दें, तो वो भी आपकी भव्यता के साथ शुरू होगा। रीजनल फिल्म सिटी की भी प्लानिंग है महाराज जी की। तो इस तरह से हम लोग फिल्म इंडस्ट्री के साथ है, और इसी के साथ मैं अपने शब्दों की ओर विराम देता हूं। धन्यवाद। आप लोग सब लोग आए, आप लोगों का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रविकिशन जी। और अब मैं विनती करूंगी श्री सतीश कौशिक जी, जो रिनाउंड एक्टर डायरेक्टर हैं, वे आए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और उत्तर प्रदेश में क्या हो बीएनसी सेंटर जहां की हमारे थिएटर्स है नहीं, और एक्चुअली हमारी कितनी आवश्यकता है, मार्केट का वॉल्यूम क्या है, हमारे हिंदुस्तान में कितने थिएटर और कितनी रिकवरी हो सकती है। आज हम बड़े खुश हो जाते हैं 200 करोड़ 400 करोड़ का बिजनेस कर लिया, लेकिन एक्चुअली इसका वॉल्यूम जो है, सुशील जी आपको बताएंगे कि अमेरिका, चाइना या यूरोप के अंदर जो थिएटर्स हैं, और हमारे हिंदुस्तान को क्या जरूरत है और हमारे यूपी को क्या जरूरत है। मैं आधा मिनट आपसे चाहूंगा कि आप सबके सामने इसको पेश करें। थैंक यू सर एंड थैंक यू एवरीबॉडी। आज जो पूरे भारत का मार्केट था सिनेमा थिएटर रिलीज का, वो 2019 कोविड से पहले करीब $2 बिलियन यानी 15 से 16 हजार करोड़ का था। लेकिन अमेरिका और चाइना का मार्केट जो $10 बिलियन है, करीब 82,000 करोड़। एक्चुअली हिंदुस्तान और हमारे देश का जो पोटेंशियल है वो लगभग 4 लाख करोड़ का मार्केट है, और उसमें पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत है तो वह है सिनेमा थिएटर। और हम आज इस समिट में कमिट कर रहे हैं कि आगे के कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में 500 से अधिक जगह पे थिएटर लगाएंगे, निवेश करेंगे 500 करोड़ से ऊपर का, और करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। थैंक यू सर। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, संजय प्रसाद जी और अवनीश जी, कि मेरे को यहाँ पर बुलाया। मैं हमेशा
यूपी में आकर के बड़ा खुश होता हूँ और अपने आप को कृतज्ञ पाता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है हम जैसे फिल्मकारों को इतनी मदद करती है और अपनी सोच को आपके सामने रखने के लिए हमेशा यहाँ पर बुलाया जाता है ताकि हम और ग्रोथ कर सकें। और वाकई में योगी जी तो कितनी बार आए हैं, बॉम्बे आए हैं, बॉम्बे के फिल्मकारों से मिले हैं, तो हमेशा ये जो हमेशा अपने आप को रियलिटी चेक करना और एक दूसरे की ग्रोथ का पता करना, इस तरह के समारोह से हमारा बड़ा ढाढ़स बनता है। मैं आप सबका एक बार से फिर धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद तस्वीर जी और जी से जो फिल्म दिखाई। थैंक यू सो मच सर। शो होस्ट वन ओनली कोमल दिनेश लाल यादव, निर्वाल जी, अवनीश कुमार अवस्थी जी, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर संजय प्रसाद जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड चेयरमैन ऑफ फिल्म बंधु शिशिर सिंह साहब, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, and all the others, all my friends sitting on the dais. Firstly, thank you so much government of UP for having me over. लोग मुझे अक्सर सुनते हैं मेरे रिव्यूज के लिए, तो मैं कुछ ज्यादा कहे बिना ये कह सकता हूँ कि कल मैं लखनऊ आया हूँ और यहाँ की फिल्म पॉलिसी के बारे में जानकारी जो मिली है, यहाँ के लोगों का प्यार और स्नेह देखकर मुझे कोई शक नहीं है कि जो फिल्म इंडस्ट्री के प्रति उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाथ बढ़ाया है, एनकरेजमेंट के लिए जो पॉलिसीज बनाई है, आई एम 100% श्योर दैट ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी। और तब मैं थोड़ा क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने सबसे पहले कहा था कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है टुवर्ड्स द फिल्म इंडस्ट्री, एंड मुझे ऐसे लगता है कि इट इज नॉट अ डे टू सून, बिकॉज जिस तेजी से फिल्म इंडस्ट्री एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री बढ़ रही है, ऐसे पॉलिसीज की और ऐसे कोई स्टेट गवर्नमेंट की बहुत आवश्यकता थी। और 1-1.5 साल 2 साल मैक्सिमम उसके बाद आप देखेंगे कि कितनी फिल्में, कितने वेब सीरीज और कितने टीवी सीरियल्स आपके उत्तर प्रदेश में शूट होते हैं। एंड स्टार्स जो है, हमारे स्टार्स, वो उनके ईगोस का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को। और लखनऊ शहर ही तहजीब का है, तमीज और तहजीब यहां से लोग सीख के जाते हैं। तो हमारे स्टार्स को जो इंपॉर्टेंस मिलेगा, मुझे नहीं लगता है इंडिया में और कहीं मिल सकता है। तो वैसे ही हाफ द बैटल इज वन, और बाकी हाफ में तो ऑफकोर्स योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी टीम है, मुझे नहीं लगता है वो कोई कसर छोड़ेंगे। एंड देयरफॉर अगर स्टार्स में मैं बात करूं, 5 on 5 स्टार्स दूंगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much for giving us 5 on 5 stars in the government of Uttar Pradesh. Thank you so much. Ladies and gentlemen, मैं जिनको बुलाना चाहूंगी, वे इंडियन फिल्म मेकर हैं। इन्होंने 60 से भी ज्यादा फिल्में बहुत सारी डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में इन्होंने बनाई है, जिनमें से बहुत शानदार फिल्में हम सबने देखी भी होगी और बड़ी यादगार फिल्में हैं। प्यार चुपका नहीं, तेरी मेहरबानियां, नसीब अपना अपना, हम तुम्हारे सनम एंड मैनी मोर। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनको डेक्कन क्रॉनिकल ने इनको बुलाया है द फास्टेस्ट प्रोड्यूसर टू मेक 50 फिल्म्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम ऑन द कोर श्री केसी बुखारिया जी, द फिल्म डायरेक्टर। आप सबको सादर प्रणाम। आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर साहब, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर, श्री गिरीश मिनिस्टर साहब, माननीय पार्लियामेंट मेंबर हेमा मालिनी जी, रवि किशन जी, निर्भा साहब, गिरीश जी, सब तमाम लोग, संजय प्रसाद जी, अवस्थी साहब, शिशिर सिंह जी,
सबको सर मंच पे मेरा तमाम प्रोड्यूसर भाई आप सबको सादर प्रणाम। और मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, अभी कुछ ही दिनों पहले हमने एक फिल्म की शूटिंग की थी जिसका नाम था दी सिग्नेचर। उसमें अनु कपूर, अनुपम खेर, मनोज जोशी, महिमा गुप्ती, रणवीर शोरी और पिक्चर हम लोग यहाँ शूटिंग करके गए। और स्पेशली दिनेश जी और इनके फिल्म बंधु की तमाम टीम, इन लोगों ने ऐसा बिहेवियर, इनका इतना अच्छा स्वभाव, इस तरह से ऐसी बातें की, ऐसी मदद की कि हमको उसके बाद आपकी किसी सबसे बड़ी मदद की जरूरत नहीं है। हम तो प्रेम और रेस्पेक्ट के भूखे आपने खूब दिया। मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ जैसे अपने घर में ही शूट कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगा कि मैं बम्बई से बाहर जाके कहीं शूट कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा, मैं आपको सच्चे दिल से बोल रहा हूँ। और इसी वजह से हम लोगों ने एक स्टूडियो बनाने रहे थे, हम लोग कई और जगह बना रहे थे। बेसिकली मैं राजस्थान का हूँ तो वही बना रहा था, लेकिन आपके माननीय श्री योगी साहब से मेरी मीटिंग हुई और 2 मिनट में सर उन्होंने फैसला लिया। नेक्स्ट डे मेरे साथ इनकी पूरी टीम बनारस गई और स्टूडियो के लिए मुझे जमीन दिखाई और फिर हमने कहा नोएडा वगैरह नहीं करना, आप मुझे लखनऊ में दीजिए, बिकॉज मेरे हिसाब से आपकी इंडस्ट्री लखनऊ में डेवलप होगी। शूटिंग है सब यही, और उसमें मैं 1 साल में चालू कर दूंगा। और हमारे ये बीच में श्री ठाकुर साहब हैं, मिनिस्टर साहब, ये जितने खूबसूरत है उतने ही खूबसूरत इनका काम है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में इनकी वाह हो रही है और इनका आशीर्वाद फिल्म इंडस्ट्री के नाम से जाते हैं, ढील के नाम से जाते हैं। टूरिस्ट they come to this place to get our own revenue के नाम से जाते हैं, ढील के नाम से जाते हैं। राधे राधे। Honorable Minister for Information and Broadcasting, Shri Anurag Thakur ji, Madhur Bhandarkar ji. There are so many of my colleagues are here from film fraternity. I know them, all of them. So I'm wonderful to see them after a long time. Madhur Bhandarkar ji, Satish Kaushik ji, our own Ravi Kishan ji, who is my colleague in Parliament too. अवनीश अवस्थी जी, केसी बोकाड़िया जी, उनको बहुत सालों के बाद मुझे आपको देखने को मिल रहा है। कोमल नाहता जी एंड आशुतोष जी। I feel extremely happy to be here with all of you this afternoon for the Global Investments Summit. For the last 3 days it's happening here. And I thank Film Bandhu for inviting me to be part of today's session. And first of all, I would like to congratulate our CM, Honorable Yogi Adityanath ji, and the entire administration for organizing this summit and inviting many industrialists and businessmen from all over the country, and also especially prominent people from Mumbai. And I'm glad that they are all very much keen and they are ready to invest in this most talked about and fast growing Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is a huge heritage place which has got such wonderful places as just now Ashutosh ji was saying. And there are so many spiritual seekers, tourists, they come to this place to get solace. And this is the place, it's a religious destination is there, like Mathura, Ayodhya, Varanasi, and many more destinations of tourism is there here. And also, this is the Ma Ganga is flowing here. Yamuna is flowing here, Saraswati is flowing, such beautiful rivers are all over this Uttar Pradesh is flowing. And this Uttar Pradesh has provided so many wonderful personalities from various walks of life, like freedom fighters, there are some artists and educationists, and I am so happy and glad to say that so many film people have come from Uttar Pradesh. I take the name of Amitabh Bachchan ji. We are very proud that he is from here.
and there is Kafi Azmi Sahab, Nasruddin Shah, Ravindra Jain ji, who gives wonderful music, and Javed Sahab, Muzaffar Ali ji, Raju Srivatsav ji, who is no more, and our own Ravi Kishan ji is from here, Uttar Pradesh. So I am glad to be part of this today's summit, and we are just discussing about what kind of investment in film media and web content is going to be. Filmmaking is a very beautiful art. From nothing they create something. Just with one small idea, they make a huge film with beautiful story, script, direction, and music, dance, film actor, beautiful actors are there, and then a lot of entertainment items are there. So they make it so beautiful that the people who are watching the film, they get simply spellbound and want to be part of this whole film. I'm so proud that I belong to this wonderful film industry, and this industry which provides entertainment, which imparts knowledge, and also connects and bonds people from across the world. So you'll be very surprised to know that जब हम रशिया में जाते हैं, proud and honored that I belong to this wonderful industry. And उसी को देखकर कई नौजवान आज के बहुत ही आकर्षित होकर फिल्म में आना चाहते हैं. मैं मथुरा से हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट आते हैं कि मुझे फिल्म में काम करो, क्योंकि आपने आज शाहरुख खान को आपके पिक्चर में इंट्रोड्यूस कराया, आप मुझे भी बनाइए कुछ. एंड वो अपना जो सपना है उसे साकार कीजिए, जिसमें फिल्म बंधु इज गोइंग टू हेल्प यू इन ए बिग वे. सो बहुत सारी उपलब्धियां दे रहे हैं, बहुत सारे सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं. उत्तर प्रदेश के कल्चर एंड हेरिटेज की सारी दुनिया में प्रचार करने के लिए फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश बनाया गया है. इस स्टेट में बनने वाली वेब सीरीज, वेब फिल्म स्टूडियोज, लैब और फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े सभी लोगों को सब्सिडी देने का प्रपोजल है. तो ये अभी आपको अवनीश अवस्थी जी ने बहुत सारे चीजें विस्तार में कहा था, तो मैं भी अपनी तरफ से भी आपको कह रही हूँ. लेकिन अब की बार देश के अन्य भाषाओं के फिल्म को भी सब्सिडी देने का प्रपोजल है. इंडियन ओरिजिन के लोग जो विदेश में बसे हैं, जैसे सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, हॉलैंड और अन्य देशों से यहाँ आकर भारतीय सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने के लिए उन्हें भी सब्सिडी मिलेगी. इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, वो आपको हमारे फिल्म बंधु के लोग अच्छी तरह से समझाएंगे. मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आज के इस सबमिट के जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड बी अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में बहुत सुंदर सुंदर जगह है, देखने लायक है. जहाँ जहाँ गंगा जी बह रही हैं उसके किनारे किनारे भी देखे तो इतना खूबसूरत जगह है. आप चंडोली की बात कर रहे थे, तो आई हैव परफॉर्म्ड देयर एंड आई सॉ गंगा फ्लोइंग देयर एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल. ऐसी एक लोकेशन और कहीं नहीं मिल सकती है. लेकिन पहले ऐसा प्रॉब्लम था कि यहाँ सिक्योरिटी नहीं थी. आज योगी जी ने ऐसा कर दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन वॉक आउट एनीवेयर. हम लोग सब आर्टिस्ट, कलाकार आराम से कहीं पर भी जाकर शूटिंग कर सकते हैं. इतना इंतजाम किया है. तो आई रियली कंग्रेचुलेट, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ योगी जी को, और जिन्होंने पूरा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इंस्पिरेशन में बहुत कुछ काम यहाँ पर पूरा है. और आपने सब मुझे यहाँ बुलाकर मेरा सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. भारत माता की. अब जो निवेश हो रहे हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो चाहे अलग के लिए, फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश का गठन किया गया है. उसके ऊपर एक छोटी सी फिल्म हम आपको दिखाना चाहेंगे, और सर को जरूर से मैं विनती करूँ कि आप जरूर से देखें. और कैन द फिल्म प्लीज. A state that has abundant, exquisite locations, magnificent landscape, possesses numerous visual spectacles,
boasts its cultural diversity, takes pride in its rich heritage, where villages are rooted in tradition and values. Cities exhibit extravagant growth, which has strategic location, has seamless connectivity, blessed with natural resources, skilled human capital, offers a vast canvas for creativity to explore and flourish, provide perfect ingredients to the film and entertainment industry, is the state of Uttar Pradesh. फिल्मों में भी ये रिफ्लेक्शन देखने को मिला। समाज में बदलाव के साथ हर दौर में फिल्में भी बदलती हैं। With the ongoing digitization and the advent of new technologies, the media and entertainment industry is expected to show strong growth over the next few years. As per estimates, the industry is poised to touch 57 to 70 billion USD by 2030. Driven mainly by strong growth in OTT, gaming, animation and VFX. Inspired by PM Modi's vision of Atmanirbhar Bharat, the state of Uttar Pradesh, under the leadership of CM Yogi Adityanath, is continuously creating opportunities by drafting and executing attractive policies. UP is the heart of this India's digital growth story. UP's film policy is crafted with the sole aim of projecting the cultural, mythological, historical, heritage and glorious traditions not only within the country but also abroad through widespread publicity, congenial atmosphere and film-friendly facilities. Some of the key highlights of the policy are SGST reimbursement at 100% to multiplex or cinema hall owner. Subsidy of ₹1 crore for films which have been shot for at least a half of its total shooting days in UP. The films for which 2/3 of its total shooting days are in UP is entitled for a subsidy up to a maximum limit of ₹2 crores. The grant of films produced by national or international award-winning producer or director of the films who have received the grant under film policy will be eligible for the following. Additional subsidy of up to a maximum of ₹25 lakhs will be provided to cast and at least 5 artists from UP. Additional subsidy of up to a maximum of ₹50 lakh will be provided in case all artists hail from UP. Adjudged India's most film-friendly state for film shooting, UP offers immense opportunities and conducive environment. Come and be a part of this land of opportunities and write your own story. Uttar Pradesh, the new India's growth engine. Entertainment industry and friends from media houses. Namaskar. Let me first thank Uttar Pradesh government, Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji and his entire team for putting up such a brilliant show of Global Investors Meet. This Global Investors Summit is a platform where you have attracted investments into various sectors, but my interest in 2 areas lies in the field of cinema and the field of sports. And if you look at most of the investor summits, these 2 fields are never included. But it is the state of Uttar Pradesh which has given emphasis. आपने अवसर दिया, माननीय योगी जी को उसके लिए बहुत बहुत आभार। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने की बात करते हैं
तो उसमें चाहे खेल मैदान बनाने की बात हो, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की बात हो, खेल प्रतिभाओं को निखारने से उनके मेडल जीतने तक की यात्रा हो, हर कदम पर उनका हाथ पकड़कर चलने के लिए सहयोग से उनका मनोबल बढ़ाने का बात हो, नरेंद्र मोदी जी सदा उनके साथ खड़े नजर आते हैं। और उत्तर प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी जहां आगाज उसकी शुरुआत इतनी जोरदार हुई, शायद ही किसी देश के किसी राज्य में 32 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की कभी बात हुई हो, कहीं पर हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश अपने आप को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है, जबकि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात अगले 2-3 सालों में करता है, तो एक तरह से देश का 5वां हिस्सा उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट करने वाला है। अब वो एनर्जी का सेक्टर हो या बाकी सेक्टर हो, वहां तो इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन सही मायने में स्पोर्ट्स और सिनेमा 2 सेक्टर ऐसे हैं जो देश की सीमाओं को तोड़कर दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर दिल जीतने का काम करते हैं और तिरंगा फहराने का काम भी करते हैं। खिलाड़ी जीतता है कभी गोल्ड मेडल तो राष्ट्रगान भी बजता है, तिरंगा भी लहराया जाता है। और कभी रीजनल फिल्म RRR की तरह भी बने तो रीजनल से नेशनल और इंटरनेशनल बनते समय नहीं लगता है। तो ये क्षेत्र ऐसा है जिसकी कोई सीमाएं नहीं। और जब मैं सीमाओं की बात करता हूं तो सतीश जी ने तो उसको थोड़ी सीमा में बांधने का काम किया, मैं उस सीमा को तोड़ के थोड़ा बाहर जा रहा हूं। आप उसको सिनेमा तक ही रहे, स्क्रीन तक ही रहे, आज दुनिया थोड़ी आगे निकल गई। मैं आपसे इस बात से सहमत हूं कि भारत जैसे देश में नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़नी चाहिए, और उसमें आपको ये जरूर कहना चाहिए था कि हर राज्य का अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय का क्या कानून है, वहां कहां बंदिशें लगती हैं, कैसे वाइबिलिटी नहीं आ पाती, क्यों स्क्रीन्स नहीं बढ़ पाए, और आपके इस मॉडल पे क्यों आना पड़ेगा। क्या अवसर हमारे पास है? आज हमारे पास कितने इंटरनेट यूजर्स हैं? 70 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स भारत के पास है। दुनिया में सबसे कम या कम खर्च करके डेटा मिलने का काम भारत में होता है। अगर हम डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो भारत में वो देखने को मिलती है। और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर किसी की बात करूं तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज बाउंड टू ग्रो बाय $100 बिलियन बाय 2030, यानी कि 7.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सन 2030 तक होगी। ये लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी लाएगी। तो साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के माध्यम से होगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन चाहे ऑन स्क्रीन हो, आज जब हम क्रिएटिव इकोनॉमी की बात करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेके स्क्रीन से लेके टेलीविजन लीनियर तक, वहां पर भारत एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। दुनिया में सबसे बड़ा फिल्म निर्माता कोई है तो हमारा देश भारत है, सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला। लेकिन जो चिंता व्यक्त की गई, उतनी ज्यादा स्क्रीन्स नहीं है। उस दिशा में क्या किया जाए? भारत में इंडोर स्टेडियम्स बहुत है जो खिलाड़ियों के लिए चाहिए। अभी कई हजारों इंडोर स्टेडियम्स और बनेंगे। तो क्या हर हफ्ते में 2 दिन ऐसे निकाले जा सकते हैं? मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलेगा। मुझे लगता है उस और भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे राज्यों के पास एक अवसर आपका मिल सकता है। ना डीजल खर्च होगा, ना उतना मैन पावर दौड़ानी पड़ेगी। आजकल तो डिजिटल की के माध्यम से आपका शुरू होता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट उससे दिखती है, लेकिन 5,000 आपको स्क्रीन एक साथ मिल सकती है। जो कमाई उससे हो वो खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर खर्च हो, तो सिनेमा और स्पोर्ट्स दोनों के लिए उससे बहुत कुछ बढ़ सकता है। Global Smart City mission was going on. We are in the process of increasing the ambit and the scope of the kind of people that are absorbed in the mission, and we are able to take care of the elderly as well as the kids. And now, as I speak, sir,
we are now standing on the verge of preparations of the Kumbh Mela that is about to happen, and we are finalizing the services that will happen, and we can say that it's going to be a very, very smart Kumbh where the people will get access to opportunities, access to facilities, services, security. Everything will be tied up in a manner that we will surprise the world with the kind of management that we've done. I'm very unfortunate that, sir, you're not spending the evening with us today. Lucknow has changed. Lucknow has changed for the better. Lucknow certainly is one of the best cities in the country to live by. I spent 7 years in Delhi, sir. Now I'm here in Lucknow, sir. I am not going back easily, sir. It is a world-class city, Lucknow, that is given it to us. Agra, sir, has been really, really praised. We are of course, in the process of making UP a great, great state to live in, sir, and a cities that care, population that cares under the visionary leadership of Chief Minister Shri Yogi Adityanath. Thank you so much, sir, for being here, sir. Good day. They are the shining examples of what other cities can learn from smart cities. The way smart cities reposition themselves in COVID response, the way smart cities have been working is something which actually paves the way of how and what ways the rapid urbanization can be addressed in a way, holistic way, the way smart cities have done. Moving on to the next speaker, I'll invite Shri Nitin Ramesh Gokaran sir, Principal Secretary, Department of Housing and Urban Planning, to share his views around reimagining cities. Thank you. Shri A.K. Sharma ji, Principal Secretary Urban Development, Arpit Abhichar, dignitaries on the dais, and delegates to this very interesting session. As the earlier speakers just mentioned, cities are engines of growth. Long ago when we were in school and college, we were informed that just a square mile of Manhattan Island in New York was worth more than the entire GDP of the country. And that's where we have progressed from today, that we are now aspiring to be a $5 trillion economy, and UP is aspiring to be a $1 trillion economy. Urban centers will continue to be engines of growth in this entire quest for a $1 trillion economy, for which the Housing and Urban Planning Department is gearing itself for a paradigm shift in what is required for this purpose. We are looking at now an entire new state capital region to be formed around Lucknow, which will encompass not just Lucknow and Kanpur but the adjoining districts, so that becomes a magnet and a counter magnet for the NCR region, and the fresh new bout of investments in New India are going to happen in the state capital region. We are looking at 100 new integrated townships across the state, so that urbanization is not just concentrated in Lucknow, but it is spread across the state. We've already received intents for more than 50 integrated townships, and we hope that in the next coming couple of months, we will touch this figure of 100 new townships. We are come out with this new transit-oriented development policy for the state. As you are aware, the state of Uttar Pradesh is home to the highest number of metros in the state. We have currently 5 of them. Agra is rapidly under progress, and we hope that by end of this year, Agra MD Metro is here, is promised that it will be 6 months ahead of schedule of what it was originally envisaged. That's the pace of work that our metro is functioning. The transit-oriented development around these metro stations will be of mixed land use with a higher FAR, enable densification and ease of movement, especially enabling non-motorized transportation and pedestrianization in the entire area, and will add value to the older parts of the city. We are looking at a transferable development right policy. I am happy to inform you, sir, that we are working with IIT Kanpur for an open source blockchain-based technology in order to have a transferable development rights, which will be piloted by Kanpur and which will be rolled out across the state. And we hope that by end of this calendar year, we will have a transferable development right, not just policy on paper, but it will be actually a marketed, tradable right which everybody will be able to access and will be shown in a very transparent manner. So just a couple of more points that I would like to mention. We are looking at the first regional rapid transit system. The MD RRTS, Mr. Vinay Kumar, is also on stage.
and he will inform you the progress of the RRTS and the trials that are undergoing at the moment. We hope that this will be launched not just as a first model RRTS in the country, but will be a model across Asia. That's what we are looking at, and it will be integrated with a complete new TOD policy, so that the station area development, which especially is possible now because of the length of the RRTS, will also be enabled. As you are aware, sir, we are having 59 Amrit-based GIS master plans which are in advanced stage of preparation. We have submitted and we hope to get another tranche of master plan GIS approvals for 63 new cities. This will transform the entire urban planning landscape in the country. The reason being that our entire act was based so far on a regulatory mechanism which was on paper but not on GIS based. This will enable us to do plans for project preparation and for execution. We have developed 7 city development plans and city logistics plans which are almost at the final stages, and have enabled us to bring out new projects which we are integrating into our current master plans. I'm happy to inform you that the online building approval system is progressing well, and the number of approvals that have been given online is almost twice as what it was earlier, and it is within the time frame that is stipulated. There are certain issues with regard to NOCs with other departments, but we hope to have a much improved version, what we are terming as the fast OP pass, which will hope to roll out in the next 3 months. Sir, under the leadership of our Honorable Chief Minister and the Urban Development Minister, we promise you that Uttar Pradesh's Housing and Urban Planning Department will be at the forefront of this transformation of urban areas, and we hope to be leaders not just in India but bold examples across the globe. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for sharing your thoughts with us today. Ladies and gentlemen, as we move on with this session, we have a screening of a very special film which is based on the subject of this session. We request everyone to kindly take a look at the screens, please. Urbanization has extended the home of one of the oldest cities in the world, Varanasi. आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा. In the same spirit, the government of Uttar Pradesh is reimagining cities as growth centers for transforming the state's economy. The goal of building a $1 trillion economy. The burgeoning economy will result in exponential growth in urban population. The government of Uttar Pradesh is actively and substantially investing in the modernization of its infrastructure, for the rejuvenation of the ancient cities, for the planned development of the urban areas, for enhanced intra- and intercity mobility and connectivity, and for building smart cities. This rapid pace of development is expected to bring an additional urban population of about 3 crore in coming years. The changing urban landscape of UP will create an increasing demand for housing, logistics, connectivity and infrastructure, hence opening up new doors of opportunity for private investors in building townships, settlements, hotels, schools, colleges, hospitals, roads, bridges and other real estate establishments. Uttar Pradesh is a tapestry of rich history and cultural heritage. The government of Uttar Pradesh has put forth an ambitious plan to revitalize ancient cities into world-class destination cities. Ayodhya Vision 2047, shown by our Honorable Prime Minister Narendra Modi and guided by Honorable CM Yogi Adityanath for the cultural, sustainable and inclusive development of Ayodhya.
With a planned investment of more than 30,000 crore rupees, Ayodhya is set to undergo a comprehensive revamp in all aspects. A greenfield township with world-class infrastructures and urban planning is under development, which will enhance the ancient glory of Ayodhya. Besides, Mathura has been chosen under Hriday scheme of Government of India. The government of Uttar Pradesh is working on improving regional and intra-city connectivity by providing eco-friendly, safe and affordable commuting options. Building India's first regional rapid transit system, RRTS corridor, which will run from Delhi to Ghaziabad and Meerut. मेट्रो न केवल बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तो उनके लिए स्टेटस का संभव बन चुका है कि हमारी सिटी मेट्रो सिटी है। Uttar Pradesh is the only state in the country to have operational metro connectivity in 5 cities: Noida, Greater Noida, Ghaziabad, Lucknow and Kanpur. Construction work in Meerut and Agra metros is going on at a fast pace. The government of Uttar Pradesh is also focusing on expanding the metro services to other major cities like Gorakhpur, Bareilly, Jhansi and Prayagraj. In Varanasi, the ropeway project is also in progress, which will facilitate public transport in the congested part of the city. Uttar Pradesh is the promising realm of urbanization, where new opportunities are emerging day by day. Under the visionary and dynamic leadership of Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji, the state is offering major incentives including single window clearances, easier land assembly, high density and FAR, concession and land use conversion charges and 100% foreign direct investment to the developers and investors. The government of Uttar Pradesh has simplified bylaws to promote affordable housing, to promote re-densification and redevelopment along transit corridors, and to ease out assembly of land for development of social and physical infrastructure. The government of Uttar Pradesh has recently notified transit-oriented development policy and transferable development rights bylaws. Plans to create 100 new greenfield self-contained townships with all the modern amenities. Already 50 townships have been identified. Transforming at least 10 destination cities into global beacons through local economic development initiatives. Developing 60 smart cities with state-of-the-art infrastructure and cutting-edge technology to enhance the quality of life for residents. GIS-based master planning of the cities will provide a digitized record of land and its usage. Micro-level economic planning is being done by preparing city development plans in 13 cities. These policies and initiatives will not only attract more investment and development in our cities, but also create new job opportunities, boost the urban economy, and enhance the quality of life for residents. Already 800 investors have signed MOUs worth investment of more than 1 lakh crore rupees. We invite you to embark on this journey of urbanization as we turn our cities into the growth engine of new Uttar Pradesh. New India's growth engine. This indeed is quite inspiring. Now moving to the next part of the program, we will have our sector experts talking about a specific theme area. I would request all the speakers to limit themselves to 3 minutes now, considering the revised timeline that we have. And the first person that I would like to call upon, Mr. Devashish Biswas, Partner Strategy and Business Development and Leader Economic Development and Transformation, Deloitte. And he would want to talk about reimagining cities to boost UP economy to $1 trillion. Thank you. Sri Hardeep Singh Puri ji, Honorable Minister for Urban Development, Sri A.K. Sharma ji, Honorable Principal Secretary, Sri Amrit Vijay ji,
Honorable Principal Secretary Sri Nitin Barashi and my friends on the dais, ladies and gentlemen, and all the experts sitting in the crowd and also investors. UP is moving towards a $1 trillion economy, and while the country is moving towards $5 trillion economy, and cities are going to play a big role. Our Honorable Minister mentioned that 60% of the country's GDP comes from the cities, and I'll just add to that, it has only 3% of the land mass. It shows also, Honorable Principal Secretary mentioned about Manhattan, a very small area. New York is actually more than $1 trillion economy, so is London. So for taking UP to $1 trillion economy, cities will play a big role and a large role. We have also seen in India, the states which has higher urbanization has higher per capita income. So that's the other thing that we will see as UP moves towards $1 trillion economy. So the current urbanization of UP is around 25%, but as UP moves towards $1 trillion economy, the urbanization will change to 35 to 40%. Now, how do we do that? And while we do that, what do we see? The cities will act as the economic catalyst, but at the same time, the cities that we build in UP needs to be sustainable and provide great quality of life. For that, what we see is that multiple initiatives may be needed, and some of them are transformational. Mr. Singh talked about the smart cities, and actually the video showed about 60 smart cities. Actually, those are smart and cognitive cities. So that's the next level of smart cities that we are talking about, which are thinking cities, which can think of what the various uses they need from the cities, and they are being built like that. Also, we talked about 100 new townships. Again, these are green townships, these are integrated townships, this will be, a lot of renewable energy will be there, and we envisage a lot of private sector investments will be coming into these townships as well. We talked about destination cities. UP has huge potential of tourism. When we were drafting the $1 trillion economic plan, we saw that tourism will be a big boost to the economy, and that's when the concept of destination cities came in. So it will be giving a very different kind of branding to the city. Right? The city will be known as a particular brand of destination, and it will be a mix of culture, the local heritage, etc. While we build those. So that's the other kind of cities we talk about. We also are thinking of city lighthouses, which will build the capacity to manage cities. There will be 20+ cities which will be producing the next skill sets to manage cities, and also when we move towards the trillion economy. So it is a mixture of multiple initiatives, around 15 of them. I'm just talking about maybe 5 or 6. But this also gives us a huge potentiality of investments within UP, because urban, as we know, is an enabler plus also an investment sector. So be it housing, be it infrastructure, be it green energy, be it skill, I believe that as we move towards circular economy, urban will also be able to bring in a lot of private sector investments. And as I speak, actually the development authorities identified huge amount of land which is available for the private sector to leverage as PPP projects and build a lot of urban infrastructures. Thank you so much. And in the audience, I'll move directly to this slide, which shows all of the cities of Uttar Pradesh. You can see what the city system is like, sitting in a very good natural topography at the foothills of the Himalayas. So it's a very rich region in that sense. Understanding economic geography is a great way to understand its economy, its geography, its natural resource potential, as well as managing all of this in urban and regional planning. That's the reason, we're looking at it spatially. We have fantastic infrastructure in Uttar Pradesh. Some of you all must have come from Delhi to Agra, Agra to Lucknow. This kind of connectivity infrastructure is the backbone of economic development. In the interest of time, I will move forward. This is a map that shows
the economic potential of Uttar Pradesh. This is the actual jobs that you have in all of the cities. We've represented jobs which are about 10,000 in each of the cities. That's what you're seeing here across various sectors of trade, technology, manufacturing, heavy manufacturing, etc. You see what it is. From an economic geography perspective, you'll see we are very close to Delhi. Delhi's agglomeration is today the leading economic agglomeration of India. It's not only the national capital, it is also the economic capital of India. And part of that agglomeration is Ghaziabad, Noida, Greater Noida. So we are part of the leading economic agglomeration of India. And that connectivity is critical. And we've recognized that in UP by giving it a sub-regional status of the national capital region. Similarly, we have recognized Lucknow, Kanpur and the region as another region. This is very critical in understanding cities and setting up economic development plan at the city level as well. And there are ways in which we can do it. One is to actually recognize these regions in your cities, move not only, and we're doing a fantastic event today where people are coming and seeing the state. We also must do this at the city levels so that city regions also compete not only with each other regionally, nationally, but also internationally. That's how we can make them global city regions. The other aspects that we can look at is to look at inviting key stakeholders. Just like we have CI, FICCI and other important industrial associations here, we also need to bring in R&D, the Research and Development Institutes, key stakeholders such as civil society and think tanks to be able to imagine the future of Uttar Pradesh. Each city region like this must look at economic development planning and strategy collectively, co-creating these. My concluding note is that while we build the infrastructure as the backbone for economic development, today globally, cities are trying to differentiate each other from each other. And the way that is done is, when you look at investment coming into your city, where I invest is not dependent only on the economic prowess anymore. I also invest and bring in talent. When I'm talking about creative workers, they will come to those cities that they give them a good urban experience. It means good walking, cycling infrastructure, affordable housing, and various other aspects. And global cities are differentiating themselves by relying on their art, architecture, local culture, and various other assets. And sitting in Lucknow today, it's very clear. We have all of these ingredients to be a global city. Thank you. Role of private sector in urban infra development and financing of growth centers in New Uttar Pradesh. Thank you. My respect to the Honorable Union Minister, the Honorable State Minister, all the dignitaries on the stage, and all our friends in this hall. Sir, I come to you as the voice of the private sector. The private sector has been holding the hands of the government in various stages across the various phases of development, and I think the last 10 to 15 years have been extremely pivotal in terms of the role that they have played. While preparing for this particular speech, we were looking at what sterling examples we should look, not only in India but globally, for the pivotal role that private sector plays. And I think one shining example is that of Singapore. Right? What has happened in the last 40 to 50 years in Singapore is unprecedented, and Singapore today, being a city-state, stands as a shining example of where urban development can really place you in the global map. If I also take the example of another place called Shenzhen in China. So 30 years back, Shenzhen was a fishing hamlet with a population of 30,000 people. Today, sir, the population of Shenzhen is 17.5 million people. And it's the third most important economic city in the whole of China. The economy has surpassed that of Hong Kong. And what has happened there is predominantly because of government's vision, but also because of a lot of private sector participation. If I also have to look at centers of excellence, smaller scale projects, I can think of something called the Canary Wharf in London. It was a London dockyards where crime and port activities and illegal activities used to happen a few decades back. But today,
it's the shining example of what private sector can do in terms of urban transformation. There is about 25 million square feet of high quality global standard real estate that has been created, and it's a thriving example of how people work, live and play in a small community. There are more examples that I can talk about. Closer home, in fact, in India, and the private sector has over many years built strong nodes. Few examples include Powai in Mumbai, Gurgaon. I can think of Bangalore as a huge contribution coming from the private sector, apart from the contribution and the vision shared by the government. And my co-speaker will also talk about one of the projects he heads in Bangalore as well. So essentially, sir, from our standpoint, from the private sector standpoint, I think we are looking at three elements. One element is ambition. We want unlimited ambition coming from the government, and that's exactly what we are seeing both at the center level as well as at the state level. There's a huge amount of aspiration that the central government and the state governments are displaying, and private sector is enthused with that kind of an approach. The second contribution, sir, that the private sector can bring is innovation. There are sterling examples both globally and in India in terms of quick, fast, affordable and relevant innovations that's happening in PropTech, in FinTech and in all aspects where, construction, for example, there are technologies and methodologies that have reduced the time frame for construction to 1/4 of conventional methods and cost of construction by half compared to conventional methods. And hence, there is huge amount of opportunity that the private sector presents in terms of bringing innovation to the ambition that the government will already have. And so the third element is opportunity. I think there is opportunity unlimited. This is the Amrit Kaal for India, and the private sector cannot be more inspired and more ambitious for the next 25 years than it has ever been. Thank you so much. Capacities. Honorable Minister, Mr. Hardeep Singh Puri. Good afternoon, Honorable Minister, Mr. Sharma. A very good afternoon to Shri Amrit Abhijat and Shri Nitin Ramesh Gopran. There is a saying which goes that the problem is not in falling, but the problem is if you fall and you don't get up. And there is so much of inspiration to see when I came to Lucknow after 20 years that there is tremendous to 95,000 rupees in 6 to 7 years, and the ease of doing business, which is phenomenal, has gone to the second position from 14th position, and this is unbelievable. And a big round of applause to the state, to the administrator of the state and to the government for doing such a fabulous job. I run a large integrated township which is considered one of the best townships not only in India but in Asia, which is in Bangalore. So I am going to talk about, and Mr. Gopran was talking about 100 integrated townships. So I am going to touch upon what are the key ingredients that we can have to have a good integrated township, so that we can use it as a startup, that we replicate with speed and we keep on delivering and executing. One is mixed land use, which was spoken about. The second aspect is housing and inclusiveness. We need housing for all. Creating walkable localities. India and Europe, the only difference is that Europe has walkable localities and India does not have. So, Minister Sharma, you were talking about public transportation. One of the things that can be resolved by keeping costs in control is that we create new cities which are walkable, which are pedestrian friendly, which are cyclable like the Netherlands, and we will save not only a lot of cost but improve the overall health of our nation. Preserving and developing open spaces is one of the ways in creating these kind of cities. Advanced public transport is the next step, because it needs a lot of capital expenditure. But the irony is that the moment you have a walkable city, advanced transportation always comes, because it kind of goes hand in gloves. Smart traffic and infrastructure service, very important, and enhanced education and healthcare, because a good city needs to have a very good education system and a very good healthcare system.
and Lucknow is a great example of it. I think that Uttar Pradesh can, it is the third economy today in India in terms of state, but the state has all the potential to become the #1 state in the country, and I say this with a lot of genuineness. And if we exploit the current global geopolitical situation in the world with so much of manufacturing moving out of Russia, Ukraine, China, and just focus on these 3 cities, we can really make this dream come true. My congratulations again to the government, to the organizers, and thank you so much for inviting me for this prestigious event. Thank you, sir. And now we move on to another guest, Mr. Gurmeet Singh Arora, National Chairman, IGDC, and MD, Rajco Metal and Resilient Cities. Over to you. Well, this says your class starts now and the clock is already ticking. Honorable Shri Deep Puri ji, Honorable Arvind Kumar Sharma ji, all the dignitaries on the dais and off the dais, good afternoon. Good afternoon. I can't hear you. Well, let me start with a small quote. Every history is the history of the present, and the way we shape our lives today will define how the coming generation will save their lives in future. Well, can we have an urban center which is a burden on our Panchbhutas, the Jal, Vayu, Agni, Akash and Dharti, or a burden on Mother Earth, or is there a solution? The Honorable Prime Minister has committed to carbon neutrality for India by 2070. How many of you will live till 2070, 43 years from now? Not many. I don't think we have the luxury of time to wait till 2070. And if you want carbon neutrality, you have to achieve energy, water and waste neutrality to reach carbon neutrality or net zero carbon. India currently is home to 11% of the global urban population, and we have surpassed China's population currently at 1.417 billion, 5 billion more than China. We have also emerged as the 5th largest economy in the world, moving towards the top 3 within the next 10 to 15 years. The Smart City mission of the Government of India is a very bold initiative towards sustainable urbanization. The Amrut 2.0, urbanizing, rejuvenating 4,700 cities, the Pradhan Mantri Awas Yojana, housing for all, and they have targets till March and next March, very ambitious targets. All this is a fantastic program of the Government of India. However, what you can measure, you can monitor. And therefore, all our cities, all our built environment must be certified green. Cities are responsible for 75% of the global CO2, and the built environment is responsible for 38% of the carbon dioxide emissions worldwide. We are currently the 2nd largest green building council in the world. Of course, we are now touching 1,000 crore square feet. This is to be announced by the President of India in New Delhi on the 16th. So to the press, we always say 9.88 billion, because let the President announce this in Delhi just next week. And we are going to become the largest green building council in the world very fast. Building resilience across 5 dimensions: physical, that's manufactured, natural, social, human and economic, which is key to a sustainable city, business, industry or community. It is the efforts to usher a green building movement in India that CII decided to practice before it reaches. Even our own headquarters is net positive on energy. We produce more energy than we can consume. We have certified a lot of buildings which do not require a municipal connection of electricity, on water, or do not give out waste. It's not expensive. Green buildings cost today, a green housing society costs 2 to 3% less if it's certified by IGBC. So it's not that I'm asking you to spend more money, but we have to move towards sustainable living. A green healthcare center has a faster recovery rate by 15%. A
A software center has higher productivity by 20%. Infosys, Wipros, Mahindra, you name it. Tech Mahindra, they are all reporting 18 to 20% higher productivity rates. In fact, the last 3 projects inaugurated by the Honorable Prime Minister, the Goa Mopa Airport saving 64% energy and 70% water consumption. The Mumbai Metro Rail 7A and 2A, the Tumkur Helicopter Factory, all IGBC certified, and I am indeed thankful to the Honorable Minister that the entire Central Vista is also going to be IGBC certified. So my request to all of you is, we are already doing a lot of green cities, 25 cities right now being certified by us. My aspiration is every city in India must be certified green. The Uttar Pradesh Metro Rail Corporation was awarded the 9th IGBC Green Champion Award just in October, because in the category of Metro Rail Authority leading green MRTS movement in India, the state government, also the Urban Development Department, jointly with the Housing and Urban Planning Department, Government of UP, has been chosen as the winner of the 8th IGBC Green Champion Award in 2021. So a lot coming, where we have to see how we can jointly reduce greenhouse emissions, reduce solid waste generation, reduce energy consumption by 50 to 70%, and water consumption by 70 to 90%. By the way, your country has 17.65%. Urban Affairs, Shri Hardeep Puri ji, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री के शर्मा जी, डायस पे उत्तर प्रदेश सरकार के senior officers, my colleagues on the dais and off the dais. In the given time, I will be sharing with you a very interesting project which is happening at a very rapid speed, and it is called Regional Rapid Transit System, which should be joining various cities in NCR. But primarily today I will be sharing some information regarding the UP, what we are doing in the state of Uttar Pradesh and how this project is shaping quickly. So, 4 years back we started this project under the leadership of Honorable Minister, and today we are doing the trials of the trains at the highest speed which is possible within the country at a speed of 180 km per hour. This happened in spite of COVID. This is a system which should be connecting Delhi to Meerut, through Ghaziabad and various other cities and towns, and it will seriously decongest not only the national capital but the whole of the area it will be serving in terms of the traffic congestion on the road or within the city. This was inaugurated in the March 19 by the Honorable Prime Minister. We can see the speed during the COVID time also. We could do the construction because the whole concept was based on sharing of information on the electronic platforms, sharing of information and collaboration with the designers, with the implementers, with the government and with the funding agencies. Now if you see some of these pictures, in September 20, we took up this project of developing a depot. Within less than 2 years, the whole depot was commissioned, and today we can see the trains have been received. And see, very quickly we are going to develop a whole small city under the BOT policy which was being mentioned by Principal Secretary Housing few minutes back. And there will be great opportunities for investors to come and spend or invest in the commercial development and the residential development in the area within the policies of Government of UP, on which we are working very closely with the government. See, the whole point is that within 4 years now we can develop a project which is very complex technologically, which is complex from the implementation viewpoint, but with the support of the state government and very active support from the Ministry of Housing, central government and the state government, we are able to implement this project very quickly. The environment within the state is so positive to work and implement this kind of projects, and these projects
once implemented, will enable a lot of investment within the influence zone of the RRTS system. There is a multi-layer mechanism starting from Honorable Chief Minister himself to the High Power Committee under the chairmanship of Chief Secretary, the Principal Secretary, and their meetings, their monitoring meetings at the commissioner and the district level. So there is a whole setup which makes the project implementation much easier in the state of UP today, and that is why probably we would make so much progress in a very limited time frame. We had the issue of getting the land, but government of UP allowed to work, and they permitted us to work without settling the various issues related to the land transfer to organization. Now this shows the way government of UP is working. Very quickly the issues which are raised, whether it is at the district level or at the government level, these are immediately considered and settled. Now under the transit-oriented policy, the opportunities are in terms of developing the commercial area. Now if you see, we are working presently with government of UP on draft master plans of Ghaziabad and Meerut districts, which will benefit in terms of additional FDR, mixed land use, vertical development, transit access, and access to various facilities within this length and breadth of 82 kilometers. We see that within the TOD policy, a large number of goals have been identified, where we will be providing very centralized, focused approach to develop healthcare facilities, hospitalities, commercial offices, co-working places, industries. So there is a huge opportunity for investment all along the RRTS corridor. The speed, the effective. My colleague, collaborator and friend Arvind Sharma ji, Amrit Abhijat ji, let me start by complimenting you on the design of this session. It is extraordinary for a number of reasons. You have curated it in such a manner that we are not just showcasing the achievements of a highly successful state, but you have present here, and I know 3 minutes is a little unfair on the experts who are easing with a lot of knowledge, but I think each one of them have made some very valuable points, and I think getting the experts here to join the discussion has imparted a quality and richness for which I want to compliment you and thank the experts. I have one small issue to pick with my friend and collaborator Sharma ji. He said the state of Uttar Pradesh welcomes you. My only submission is I belong to the state of Uttar Pradesh. And I have always felt welcome here. 3 days after I was inducted into the Council of Ministers by the Honorable Prime Minister, I had the privilege of visiting Lucknow for the inauguration of the metro line there. And I can tell you that experience in terms of the start of a journey has made a very deep impression not only on me but on anyone else who has been associated with Uttar Pradesh's urban story. I have just 2 or 3 things which I want to mention to you without imparting any political judgment to this. One of the first lessons I learned from September 3, 2017, and when I analyzed the unfolding of the central schemes, all of them, not just one, is that
government headed by the Honorable Chief Minister came in, the pace at which progress was accelerated was unbelievable. Most of our central schemes started in June 2015. It is entirely possible that a new scheme takes a little longer in terms of dissemination of knowledge instead of people being aware. Now I can tell you about the Pradhan Mantri Awas Yojana. My friend Amrit Avinat, who is now Principal Secretary here, he was a Joint Secretary in the ministry dealing with the Pradhan Mantri Awas Yojana. I think your title was JSHFA, is that correct? The Secretary in the ministry was a gentleman who is now the Chief Secretary of Uttar Pradesh. दोनों ने पूरा दम लगा दिया. They were not able to get a proper demand assessment from the Uttar Pradesh state government on the Pradhan Mantri Awas Yojana. This is the period between June 2015 when the scheme started and when Yogi ji took over. After that, see what happens. I think, if memory serves me right, the total number of demand for Pradhan Mantri Awas Yojana which came from this large state was 17,000 in that 17-month period. And in the next 17 months after Yogi ji took over, it became 17 lakh. So today Uttar Pradesh is right at the top of the total numbers on Pradhan Mantri Awas Yojana. My speech, which I am deviating from my prepared text, has all the statistics. How Uttar Pradesh is done in Amrut, how Uttar Pradesh is done on smart cities. But let me share another experience. I was telling the Honorable Minister that when I was in Goa for some meeting and I was told that the Honorable Chief Minister wanted to speak to me, that day we had announced, I think, the names of the next 4 smart cities. So I was telling somebody at a dinner, I think Yogi ji must be very happy that the remaining of the cities to make it a total 10 has been announced. It turned out to be otherwise. He was telling me, हमने तो 7 और मांगी थी, वो आपने दी नहीं. So I told him that under the scheme you can only give 10 to a state. But they have gone ahead and done the other 7. And what Sharma ji was telling me just now, they have also identified other district headquarters and they will make them into smart cities of that kind. This is what you call progress. That you utilize a central scheme as the seed money, as the incentive, and then you mobilize resources. I must tell you, I was very happy when one of the experts said that this is the voice of the private sector. Let me make an honest, upright confession to you. No government scheme can work unless the private sector is very much central to it. We can only devise an ecosystem. Even under the Smart Cities mission, I don't remember the figures, total 2,05,000 crores. If you look at the center's contribution and if you look at the state's contribution, but I think about 47,000 crores or thereabouts is public-private partnership. If you look at all the other schemes, the private sector is very central to it. And even if you go into the, let's say, affordable housing and partnership, state government provides the land, central government provides 1.5 lakhs to the beneficiary, state government provides the same amount or more, but it's the private sector which will undertake the work. So I want to say that let there be no mistake, it's a very constructive, comprehensive partnership between the state, central government. I could easily take the line. Of course, nobody would take me seriously. The land is a state subject, central government has nothing to do with it. Instead, it's the other way around. We have taken advantage of the fact that the central government can act as a catalyst, as an incentivizer, and ultimately the responsibility is that of the state government. And when you see the figures in Uttar Pradesh, one is delighted. Here is what is called progress in real terms. Let me come back to the context in which this Global Investor Summit is taking place. In the 8 years plus that the Honorable Prime Minister has assumed responsibility, India has moved from being the 9th largest economy in the world to the 5th largest economy. Per capita income in India has gone up
doubled in this period. Today, if we are a $3.5 trillion economy and you're growing at say 6.5% plus, no one who is in anyone, even our detractors, who periodically try to cast a negative narrative, will find it difficult to believe that $5 trillion is actually no longer a talking point. You will be a $5 trillion economy at this rate in the next 2 years. But today you're already thinking of another narrative, which is, if I look at a report, I think it was Ernst & Young, which said by 2040 or thereabouts, if the Honorable Prime Minister wants India to be a Viksit Desh or a developed country by 2047, when we are 100, it won't take that long, it will happen earlier. Because the Ernst & Young report says by 2040 or so, India will be a what, $25 trillion economy or thereabouts. And see what that does to the per capita income. I am absolutely sure that the central flagship mission starting from Swachhta, I mean, I am a regular visitor to Lucknow. I have been in the last 5.5 years that I have been a member of the Council of Ministers. But Sharma ji and I were together in Varanasi the other day. You see the transformation there. If you look at I had been told that the city of Lucknow has been specially prepared for this Global Investor Summit. But my God, it reminded me of an experience I had very soon after joining the Council of Ministers. I visited, I think, Bhopal or Indore. I think it's probably Indore. For a conference, international conference on the 3 R's: reduce, recycle, and reuse, I think. And I speak a little bit of Japanese, so there was a Japanese minister, my counterpart. I asked him, when did you arrive? He said, last evening. I said, how did you spend the evening? I was making polite conversation. He said, I went around the city. So I asked him, doing what? He said, I went around the city looking for dirt. So I was a little taken aback. He said, well, I've been told that Indore is one of the cleanest cities in the world. And here was a certificate coming from a Japanese minister. He said, I couldn't find any. The point I'm making is, the Swachhta mission is the fulcrum of all our central schemes of urban rejuvenation. My distinguished predecessor, who went on to become the Vice President of India, used to use the word renaissance. I'm a little more careful with words, but this is what I see. If you see Lucknow, the way it has turned out for this Global Investor Summit, what is an investor looking for? I'm asking myself, not only these people here, many of them are people I've worked with. An investor is looking for return on his investment, his or her investment. An investor is also wanting to deploy resources for objectives. My friend, whom I call the chief plumber of and green plumber, he wants everything, it's a map. He says he wants green growth, but so do all of us. So if you come up with projects which give you a good return on investment, plus they help in the green transition, by the way, I would feel equally comfortable in the context of UP, from 1.4% biofuel blending in 2014 to 10.7% now, and it's going to 20% 5 years in advance. It was slated for 2030, we're going to do it by 2025. I was, when my colleague and friend was saying कि 4,000 गार्बेज पॉइंट्स हटाए गए और किसी हमारे भाई का घर का पता बदल गया, that is the real story here. Because frankly, what was the situation in 2014? How much of our municipal waste, I'm only talking about municipal waste, was properly reprocessed? I think it was 17%. And from 2014 to 2023, I mean, ideally I would have liked it to be 100%, but look where we reached, 76% or thereabouts.
And with the kind of technology that we have at our disposal, the fact that we can make energy from waste, the fact that investment is coming in, is not only those 4,000 garbage points which will be reduced, but you are going into a situation, as I see in cities like Surat and Ahmedabad, that the garbage points are under the ground. All you need is a truck coming in here, outside is nothing outside. One of our friends from the private sector spoke about ambition, innovation and opportunity. I want to add something if I may. Along with ambition, I want to add scale. Because ambition is what you desire, but I think what we are demonstrating here is our capacity to do scale production. And when you come to green hydrogen, for instance, why will India succeed? Because we have generation of demand, we have the capacity to produce it. You need two things for green hydrogen. You need electrolyzers. A company which has 30% of the global production came to see me the other day and he said, we are in active collaboration with Indian companies to produce that. You produce green hydrogen, but you also need it to be consumed because green hydrogen does not lend itself to long transportation. This is India's success story. That in all these fronts, you are able not only to have ambition, innovation, I agree, opportunity is what private sector and the government working together will produce, but you must be able to scale it. And I think that's scaling up, whether it's a solar cooker that the Honorable Prime Minister unveiled in Bengaluru during India Energy Week, or the E20 fuel that the Honorable Prime Minister started, which is now on a pilot project all over, or it's the sheer magnitude of the housing construction. In the year 2019, as my colleague Mr. Abhijat was reminding me, when I was asking what date was it, the Prime Minister unveiled a global housing technology construction challenge. He invited companies from all over the world to come and display their expertise and their technologies. We shortlisted or empaneled 53 technologies based on that experience. And we took 6 of those technologies to produce lighthouse projects in 6 of our cities to make 1,000 modern, ultra-modern, totally green housing units, 1,000 within 1 year, and we have succeeded. And the beauty of the thing, like one of the Honorable Prime Minister wanted to monitor one of the projects, and we got a message that the monitoring will take place based on data which is real time, that is satellite imagery and drones. I think Mr. Abhijat was the Joint Secretary with me. This is the use of technology. And to those of you who are in the private sector, let me try a bit of, it's not hard sell, it's a fact. Come and visit us in Nirman Bhavan in Delhi. We have on the top floor a place called the Urban Observatory, where through the use of technology, we monitor every project taking place in which of a scale, which we are involved in on a real-time basis. So this is what has brought in a transformational change. Now I could go on and on. It's very unfair. The others got 3 minutes and I'm rambling on. But I'm delighted to be here. I think the timing of this Global Investors Conference is a very significant one because we are now heading into a new... I'm not going to touch areas like how much of lithium have we discovered, whether it's 5.9 tons. I'm very circumspect. But let me tell you, there is a revolution taking place out there. Not only in vehicular traffic and urban transport, I'm also the Minister for Urban Transportation, and when the RRTS is rolled out, I don't have time, but let me give you one statistic. In 2002, when Vajpayee was the Prime Minister, we started the metro system. Today, we are the 5th largest metro system in the world with about 850 kilometers. But in a few months' time, we will become the 3rd largest. Few months. And by next year,
we might end up by 2024 sometime, we might end up as the second largest after China. We would have even surpassed the United States because we have 1,039 kilometers under construction, which is time-bound and taking place. So whether it's urban transport, how to prepare students not to abuse one another, how to be disciplined and to defend themselves. Meditation, spiritual training, master the physical body, the elements, and the spiritual body. Super important to teach that. That's the most spiritual training policy that's given because of the school and the growth. Following these are again adding foundation again. Everything starts from the grassroots. To move the body and really use it to activate more of their bodies, more of their spiritual bodies. बहुत देश का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में जिस तरह से खेल विभाग पूरे देश में नई ऊंचाइयां छू रहा है, दुनिया में भारत का नाम हो रहा पर प्रयासशील है। खिलाड़ियों में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है जिससे वह लाभ उठाकर खेल में अपना कैरियर बना सकते हैं। मैं जिक्र करूंगा, हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 75 जिलों में 16 जिलों को विकसित करने के लिए छात्रावास का निर्माण किया है, जहां पर खिलाड़ी रहकर खेल की विधा की जानकारी प्राप्त करते हैं और उस खेल में आगे बढ़ने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश है और मैं तो इस बात को कहता हूँ, प्रदेश आबादी के बड़े प्रदेश होने के बावजूद भी अन्य प्रदेशों में ये व्यवस्था अभी नहीं हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, सैफई में, गोरखपुर में, गुरु गोविंद सिंह में, जिसमें 1225 छात्र रहकर वहाँ अध्ययन करते हैं, खेल की विधा को सीखते हैं। दोनों काम रहकर करते हैं। उनके खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था, टीम की व्यवस्था हमारी सरकार देती है और हमारे 3 स्पोर्ट कॉलेज अभी निर्माणाधीन है। एक फतेहपुर में, दूसरा जो है सहारनपुर में और तीसरा बलिया में। फतेहपुर निर्माण की पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, अगले सत्र में हम उसको भी प्रारंभ कर देंगे और ये हमारे तीनों जो स्पोर्ट्स कॉलेज निर्माणाधीन बन जाने के कारण से खेल की गतिविधि खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा और आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 2022 से 27 तक की एक खेल नीति बनाई। विगत कई वर्षों से यहाँ कोई खेल नीति बनी नहीं थी, पुरानी नीति के आधार पर चल रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने खेल नीति बनाई है और उसमें पूरा ध्यान रखकर कैसे खिलाड़ियों को हम आगे बढ़ाएंगे, उनको कैसे मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे, उस दिशा में सारी व्यवस्था सुनिश्चित किया है। यही नहीं, भारत सरकार की तर्ज पर हम लोगों ने खेल नीति में इस बात का प्रावधान किया है कि हम उत्तर प्रदेश खेल प्राधिकरण का भी गठन करेंगे। उस खेल प्राधिकरण के गठन में हमारे इंस्टीट्यूट कौन करेगा, प्लानिंग कौन बनाएगा और उसके बाद फाइनेंशियल की व्यवस्था, इन 4 प्रकारों की व्यवस्था की भी उसमें रूपरेखा तैयार करी है। जल्द ही मंत्री परिषद की मंजूरी मिल जाने के बाद दूसरी मैं इस बात की जिक्र करूंगा, अभी बनारस में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि क्रय किया है। लगभग 121 करोड़ की लागत जो भूमि क्रय करने में किया है, बीसीसीआई के माध्यम से उनको जो है एग्रीमेंट करके और खेल की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए उस दिशा में कदम उठाया है। निश्चित मंत्री परिषद में इसकी मंजूरी मिली है। 10 लाख रुपए जो है जिला प्रोत्साहन समिति में और 10 लाख रुपए जिला कोषागार में जमा करेंगे और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करेंगे, बीसीसीआई उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। इस दिशा में कदम उठा। मैं जिक्र करूंगा एक चीज की और, पुराने जमाने में लोग कहते थे, गाँव में इस बात को कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, लेकिन उस परिभाषा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय खेल मंत्री भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी ने बदल दिया है कि खेलोगे कूदोगे तो भी मिलेगा रोजगार। इस दिशा में कदम उठाया सरकार ने। मैं आज इस बात की जिक्र करना चाहूँ, जो हमारे पदक विजेता खिलाड़ी थे, पैरा
ओलंपिक्स के उनको जो है सरकारी नौकरी सेवा योजना में कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में इस बात का प्रस्ताव लाई कि हम ऐसे पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी सेवा योजना देंगे, राज प्रकृत अधिकारी क्लास 2 के पद पर सेवा योजना करेंगे। जो लोक सेवा आयोग की परिधि है, हमारी सरकार ने लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर करके और उनको सीधी भर्ती के माध्यम से उनको राज प्रकृत अधिकारी के पद युक्त करने का काम किया है। और उसमें जो है ललित उपाध्याय जी को डिप्टी एसपी के पद पर और विजय यादव को नायब तहसीलदार के पद पर समायोजन करने का काम हमारी सरकार ने किया। खिलाड़ियों में खिलाड़ियों में नया उमंग आया है और निश्चित रूप से उनको आज की उत्तर प्रदेश सरकार की ओर, भारत सरकार की ओर। और मैं इस बात की जिक्र करूँ, हमारा जो उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स कोटे थे, हम लोगों ने मंत्रिमंडल संभालने के बाद इस बात का पहल किया है कि जितने भी स्पोर्ट्स कोटे हर विभाग में भरे जा रहे नहीं है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, खुशी है कि पुलिस विभाग ने विज्ञापन निकाल दिया है। वहाँ भर्ती की प्रक्रिया, सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, अन्य विभागों में भी प्रारंभ होगी और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ाने का काम हमारा युवा कल्याण विभाग भी है। युवा कल्याण विभाग ग्रामीण अंचलों में काम करता है। सन 1980 से लेकर और कहा था 2017 तक कुल 81 स्टेडियम ग्रामीण अंचलों में बने थे। लेकिन 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री और माननीय खेल मंत्री भारत सरकार के सहयोग से हमारी सरकार ने 41 नए स्टेडियम ग्रामीण अंचल में बनाने का काम किया है, जो खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। खिलाड़ी उस विधा में जानकारी हासिल करके आगे बढ़ सकता है। ग्रामीण अंचल में हमारे नवयुवक मंगल दल है, महिला मंगल दल है, उनको भी हम हर जो है वर्ष जो है 15,000 ऐसे ग्राम पंचायतों को हम जो है उनको प्रोत्साहन राशि, प्रोत्साहन सामग्री देते हैं और जो खेल के लिए, जिससे खेल की वो जानकारी प्राप्त करके और आगे बढ़ सके और उनके लिए साधन उपलब्ध कराने का काम सरकार ने किया। मैं इस अवसर पर इस बात का भी जिक्र करूंगा कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल और हमारे जो प्राथमिक स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज हैं और जो हमारे महाविद्यालय हैं या CBSE ICSE के बोर्ड के स्कूल हैं, हमारे खेल मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है अभी कि अगर वो खेल की प्रतियोगिताओं का आयोजन कराते हैं और उनको सर्टिफिकेट देते हैं, वो उनके जीवन में खिलाड़ी के लिए उपयोगी नहीं होता, वो सिर्फ जो है प्रमाण पत्र ही रह जाता है। हम लोग इस बात का विचार कर रहे हैं। हमारी अध्यक्षता में भी एक मीटिंग माननीय नवनीत कुमार सहगल ने आयोजित किया था और वो बैठक हुई थी। हम लोग इस बात को निर्णय लिया है कि ये विभाग जो आयोजन भी हो उसका प्रमाण पत्र जो दिया जाए खेल विभाग द्वारा दिया जाए, जिससे उस खिलाड़ी के जीवन में बदलाव के लिए वो सहायक हो सके। इस दिशा में भी हम आगे आने वाले समयों में विचार करके कदम उठाए। Thank you so much. Now we'd like to call our Honorable Union Minister of Youth Affairs and Sports, Government of India. Please welcome our chief guest, Shri Anurag Singh Thakur ji, with a huge round of applause. Dignitaries of the dais, to make sports sector a part of it, but it is the Uttar Pradesh who has taken the initiative and includes sports sector. When Uttar Pradesh aspires to be the $1 trillion economy, I'm sure sports has to play an important role in that also. As India is witnessing a paradigm shift in the way sports and sports persons are seen and celebrated in the country today. We have two big sports persons amongst us today, Mr. Abhinav Bindra and Suresh Raina. And I would like to say there is a widespread interest, institutional support and investments in the field of sports in India today. This is not just in terms of performance of Indian athletes in prestigious national and international tournaments, but also bringing global sports events to India. This scale and stature of sporting success in India could not have been possible without the vision of the
also enable them to adequately showcase it to the public, thus providing conducive options to connect with the investors and the industry alike. It gives me immense joy to see Olympic gold medalist and shooter Mr. Abhinav Bindra, celebrated cricketer and the part of the World Cup team Mr. Suresh Raina, Chief Strategy Officer Dorna, MotoGP Mr. Carlos, founder of the Trans Stadium Mr. Udit Seth, and founder of the Fan Board Mr. Yannick Boraco, and from the World Bank Ms. Benedict, and Mr. Paul V. Jensen from the European Business and Technology Center gathered here to have an invigorating dialogue on the extremely pertinent subject, harnessing opportunities in sports sector. Uttar Pradesh is steadily becoming a hub of sports in India. In a mega event in 2021, the UP government has felicitated the Tokyo Olympics medalist. And they have not only felicitated the Tokyo Olympic medalist, but let me put it on record here today that it was the initiative of Uttar Pradesh and affection on the players of other states as well. अपने राज्य के खिलाड़ियों को तो सम्मानित करने का काम हर राज्य करता होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश ने देश के सभी राज्य के खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में मेडल जीते उनको सम्मानित करने का काम किया। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। And to provide access to the sports facilities to the rural dwellers, the state government has been building open gymnasiums and mini stadiums in remote rural hinterlands. In 2021, taking forward the motto of Khelo India, the Uttar Pradesh government had announced that the state will be adopting two games, wrestling and badminton, and financing their promotion in the state for the next 10 years. And if every state become two games at least, two sports at least, I think they can focus much on those two, while they can develop the other sports as well. But if they focus majorly on two sports, and 36 states and union territories, if they focus, each state focus on two sports, I think that would be a game changer in creating such infrastructure in other parts of the country. So UP is all set to host 3 major tournaments this year. One is the MotoGP, Khelo India University Games, and the weightlifting World Championship here as well. With all this and more, I am confident that the seed of sporting success are being sowed in Uttar Pradesh slowly and steadily. The state is building a strong foundation to ensure our athletes participate and win medals for the country. In order to realize Prime Minister Modi's Sankalp or the vision, Sankalp se Siddhi in sports, there is a whopping 11% increase in the budget allocation from the last year. And if you look at the last 8 years, the budget has gone 3 times more in the last 8 years with the government of India. India has seen an astounding medal galore in the several international sporting events like the Tokyo Olympics, Tokyo Paralympics, and the Brazil Deaf Olympics. India, in the last 73 years, for the first time won the gold medal in the Thomas Cup Badminton Championship. Not only that, it was the Prime Minister Modi who is time and again before the tournament, even while during the tournament, if need be, speaks to the players, motivate them when they are down. And I think I have seen him. He knows each and every player. He knows many players, family members also. And while his tenure as the Chief Minister of the Gujarat, he has put a lot of emphasis on the promotion of the game, whether from Olympics to the Paralympic Games, which have been, we haven't seen much as far as the state of Gujarat in those years, but Prime Minister Modi raised the budget, started Khel Mahakumbh. Today I see more than 200 MPs
organizing such events in their constituencies where lakhs of Indian youth are participating in such sporting events. If every elected representative starts doing one or other kind of events, we could see millions of Indians, especially the athletes, performing in those or participating in those events, competitions and championships. So we can have more such competition in the future. Khelo India Abhiyan is the initiative of Prime Minister Modi. Khelo India Youth Games, Khelo India University Games and the Khelo India Winter Games. Yesterday, we inaugurated the Khelo India Winter Games, where from 29 states and union territories, 1,500 plus players are participating in Gulbarga, Jammu and Kashmir. Yesterday also we have concluded the Khelo India Youth Games, where more than 5,812 players participated and 12 players broke 25 national records in the Khelo India Games this year. And I am pleased to say, last year when Haryana organized the Khelo India Youth Games, 12 national records were broken and this year 25 national records are broken. Out of 12 last year, 11 national records were broken by the girls. बेटियों ने 11 national records तोड़े थे. And this year, out of 25, more than 19 records are broken by the girls. So that means बेटी और बेटियां ज़्यादा अच्छा वहाँ पर प्रदर्शन कर पाए. कुछ बातें मुझे यहाँ पर जरूर बतानी है. And I like to say it in English so that all would understand. One of the gold medal winner is Sonam. Her father is a bricklayer labor. She hails from a far-flung area and she has won the gold medal in the 2,000 meter steeplechase. Shanti Viswas, her father is a cab driver. She hails from West Bengal, Nadia village, which is on the border of Bangladesh. She won 3 medals, including 2 gold medals. Another is Asha Kiran Barla. She is among the 4 children. She lost her father. Her mother is the only bread earner in the family. She is a laborer. And look at her, how she has worked well, progressed well. She has won the gold medal in 1500 meter event. So one after another, our girls have done extremely well. Martina Devi, who is getting trained at the National Center of Excellence here in Lucknow itself, has won 7 medals and broken 7 national records this year also. ग्रामीण भारत के बच्चों ने ज्यादा अच्छा करके दिखाया. It is from the rural area, from the children and the players who have done extremely well. So what do we need? We need infrastructure in the urban areas as well as in the rural areas. We need more events, competitions and leagues in the country today. We need more coaches and trainers. And for a country as diverse as India, we need different models. One model can't fit all. For a state like Uttar Pradesh, where you have 250 million people living in Uttar Pradesh, you can understand the requirement of Uttar Pradesh. So on one hand, we have the MotoGP. On the other hand, we have the Formula E, which we concluded yesterday in Hyderabad. MotoGP will happen in the state of Uttar Pradesh. At the same time, we have traditional games like Malkham, Yogasana, Kalaripattu, Thangta, Gatka also making news in the country. We are also promoting the traditional sports, not leaving it just the regional sports, making them national, and in the future they will become the international sports in the coming years as well. So friends, what we need today is the size and scale to attract more investment into the country. And while we get more investment, we also need to increase the speed to deliver the infrastructure at the grassroots level. We should take more than, as of now, we are taking 2 to 3 years to build an indoor stadium. I was looking at the
build a 8 crore rupees worth indoor stadium. It should be finished in 10 months' time. It should be dedicated to the sports person in the least time, and we are working towards that direction. Sports is a state subject. I think the states and centre should come together and generate a demand that in this year we need these many hockey astroturf, these many synthetic tracks, these many football astroturfs, these many indoor stadiums. Then the industry will be keen to have the important to raise funds through those big facilities what we have created. Not only that, we need more coaches in the country. When I took over as the sports minister, we made a change. Rather than appointing more officers, we have surrendered those posts and have hired more than 450 coaches in 1 year time. And we're going to hire more coaches in the next years to make more coaches available to them. But for a country like India, when the World Bank representative is here, we sent a note to the World Bank. Why can't we have something on the technology based? Coaching the coach, training the trainer kind of programs, where we can train thousands and thousands of coaches. From a physical education teacher, why can't they become a coach of one sport? They can easily become. And last year we started with the National Institute of Physical Education, Gwalior LNIP. We started an online course. We have trained many such physical education teachers. We have upgraded them to the next level. But then there should be a refresher course every year. We can come together, various disciplines, various sports can come together, and we can have the online platform where we can coach them. Same kind of application can be made for the players as well, where they can learn the basic techniques on the online platform. There are certain platforms available, but for each game, we need to have such kind of options available. We should host more events, but we should also either you stream that on the online platforms or on the linear platforms like television. All a sports person needs is a recognition, whether through the newspapers, through the TV channels, through the social programs, or maybe on the online streaming processes. All we can do is come together and make it happen. There are many games from fencing to golfing where our teams, our players are starting doing better. Let us not restrict ourselves to few games. We need to look at and many other such tournaments, and we are ready to host many such tournaments in the few weeks. No other state has done and included the sports sector. And we have seen how the corporates have come forward, how the World Bank has come forward, how the companies have come forward to utilize their corporate social responsibility funds like the NCL to train 5,000 students in the state of Uttar Pradesh. Let us join hands. There are 5 stakeholders. One is the Government of India, second is the state governments, third is the National Sports Federation, and fourth is the State Sports Association, and fifth is the corporate world, individuals, NGOs. They must come forward and contribute to make India a sporting superpower, what Narendra Modi desires India to become. If India can become from 10th largest economy to the 5th largest economy of the world, yes, we can become the sporting superpower of the world. All we need to do is believe in ourselves and put in all efforts. There should be the right intent, and there should be, let us work on the size and scale to promote the sports, and let us also work on the speed to deliver fast and achieve fast. Thank you once again. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Uttar Pradesh. Thank you.
माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसका एक विश्वास आपके प्रति किस प्रकार से और स्थापना कहा जाता है इलेक्शन ईयर में ऐसा कदम लेना और स्थापना सुविधाओं का विकास जो देश को अगले 25 वर्षों तक जो हमारा अमृतकाल है उसका विकास करेगा। सर इसके अलावा जो संचार मंत्रालय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स ये तीनों मंत्रालय है डिजिटल इंडिया के समय भारत की एक पहचान पूरे दुनिया में बनाया है। मुझे आधार में काम किया उन्होंने और आज डिजिटल इंडिया में पूरे वर्ल्ड में हमारी जान रही है। सर उस मंत्रालय को हेड कर रहे हैं। मैं यहाँ पर हमारे मेंबर इतना श्री आमंत्रित हो रहे हैं उन्हें भी अवश्य होगा और आपके उपस्थित दिए मेरे दोनों बॉसर्स हमारे माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी और माननीय राज्य मंत्री जी जो कि हमारे साथी उसकी भूमिका निभाते हैं उनका मैं इस सेशन में स्वागत करना चाहूँगा और मेरे साथी श्री अजय चौहान जी जो हर समय यहाँ पे इस पूरे विभाग को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। सर सिर्फ इतना आपने क्या कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने रेलवे में इतना बजट बढ़ाकर रेलवे के माध्यम से लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है उसको और तीव्र गति से कंज्यूमर तक पहुँचाने का या पोस्ट तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया है। उसी तरह पीडब्ल्यूडी ने क्योंकि संचार माध्यम ही सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने भी उसी प्रकार 30,000 करोड़ के बजट के साथ इतना ही बजट हमारा सिस्टम संस्थान है इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के साथ और हमारे 10 और विभाग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़े बजट के माध्यम से लगभग 4 लाख किलोमीटर सड़कों का काम उठाया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी कर्मठता है जिनकी दूरदृष्टि और जिनकी 24/7 अप्रोच के कारण उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है उसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो उनका लक्ष्य है उसका सपना है उसमें हम इस बात की तैयारी कर रहे हैं सर कि 5 साल में हम भी लगभग उसको 6 गुना करते हुए 1,80,000 करोड़ तक पहुंचेंगे और उसमें अपनी कैपेसिटी को 3 गुना करने की हम भी व्यवस्था कर रहे हैं सर आपसे प्रेरणा लेकर। सर आपको पता है कि 10 लाख करोड़ का टारगेट में सर पॉलिसी घोषित किया आरोपी की बहुत ही आई थी वो पॉलिसी जिससे यूपी की जो शेयरिंग थी उसको आपने रेलवे ट्राइंग में शामिल करते हुए अपने को दिया था उसके लिए भी हम आपको आभार व्यक्त करना चाहेंगे सर और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Member Infrastructure Railway Board Mr. Roop N. Shankar जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें and he will be giving us a speech on the very important topic, the most crucial topic, which is role of railways in Uttar Pradesh. शिक्षा को जोड़ने के लिए किया गया शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा दी लेकिन कालांतर में उसका स्वरूप बदला और जब स्वरूप बदला कोई आवश्यकता पड़ी आज शिक्षा नीति के लिए। हमारे पूर्व में जहां से शिक्षा मिले मैंने जैसे कहा संस्कृत साहित्य एक उक्ति है जिसका अर्थ है कि शिक्षा जहां से भी मिले सब तरफ की दिशाएं दरवाजे खोल के रखना चाहिए। हमने पशु पक्षियों से यहाँ की जड़ और चेतन से भी शिक्षा ग्रहण की है। वृक्ष फल नहीं खाता है नदी न पीवे नील और मानव के काम में साधन दराज नहीं यानी जड़ से भी वृक्ष और नदियों से भी
शिक्षा के माध्यम से समाज तक कैसे पहुंचे, ये हमारी शिक्षा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे दूर। इस समाज में जो बड़ा है उसका क्या दायित्व है समाज की, ये संस्कार कहां से आए? हमने इस वृक्षों से भी ये संस्कार दिया और शिक्षा के माध्यम से समाज तक पहुंचाया। यह शिक्षा दी। शिक्षा संस्कार से जुड़े, शिक्षा डिग्री का माध्यम न बने, शिक्षा ज्ञान का माध्यम। किसी विद्वान ने ये कहा है कि पढ़ना जरूरी है लेकिन उससे ज्यादा सीखना जरूरी है। पढ़ना तो पढ़ा लिखा तो कोई भूल सकता है, आदमी जो पढ़ा हुआ, लेकिन सीखा हुआ कभी नहीं भूल सकता। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ पढ़ने के साथ उसको सीखना भी यह जरूरी है। ये हमारी शिक्षा थी और शिक्षा की एनईपी का मूल आधार यही है, अपने अतीत के वैशिष्ट्य को वर्तमान की आधुनिकता से समाविष्ट करना। यह एनईपी 2020 में है। मित्रों, यही मूल आधार है एनईपी का। शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, ये न्यूक्लियस है एनईपी। और इस न्यूक्लियस के परिधि में पूरी शिक्षा की योजना बनती है, शिक्षा के कार्यक्रम बनते हैं। यही 2020 की एनईपी की देन है। और इससे यह योजना बनी है कि शिक्षा मात्र डिग्री के लिए नहीं, शिक्षा ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, विचार, विवेक, इस सब से जोड़ती है, हमको संस्कार से जोड़ती है। यह शिक्षा ये मूल में होना चाहिए। शिक्षा से विचार मिले, शिक्षा से संस्कार मिले, शिक्षा से रोजगार मिले, शिक्षा से संसार मिले। लोग और परलोक दोनों सुधराए, यह शिक्षा होनी चाहिए। यह हमारी एनईपी 2020 देती है। और इसके अमलीकरण के लिए उत्तर प्रदेश ने शिक्षा को नए कलेवर में आगे बढ़ाया है। हमने समाज और सरकार ये शिक्षा से कैसे जुड़े, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा कैसे जुड़े, क्योंकि हम जोड़ने पर विश्वास करते हैं, तोड़ने पर नहीं। शिक्षा यह भी सिखाती है कि व्यक्ति परिवार से कैसे जुड़े, परिवार समाज से कैसे जुड़े, समाज राष्ट्र से कैसे जुड़े, राष्ट्र दुनिया से कैसे जुड़े और दुनिया पूरी सृष्टि। पिछले दिनों 3 राजकीय विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर। शिक्षा का प्रसार और प्रचार कितना बढ़ रहा है, आपके सामने बताना चाहता हूं। कितना हम आगे जो इससे जुड़ना चाहते हैं उसको हम किससे प्रोत्साहित कर रही है उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में। इन 3 तो राजकीय विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू हो गया है, 11 निजी विश्वविद्यालय को आशय पत्र निर्गत किए जा चुके हैं। इससे शिक्षा में सुधार होगा, क्वालिटी में सुधार होगा और 14 निर्गत पत्र दिए जाने की बिल्कुल तैयारी है, प्रक्रिया में शामिल है। पूरा राष्ट्र एक है, यह हम शिक्षा के माध्यम से बताना चाहते हैं, क्योंकि पूरे राष्ट्र के जहां के भी, कश्मीर से कन्याकुमारी, कामाख्या से कामरूप, जहां के भी लोग आगे जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हम शिक्षा के लिए को आगे बढ़ा रहे हैं। विश्वविद्यालय खोलने के लिए दरवाजे खुले हुए हमारे प्रदेश सरकार से। पिछले कुछ 1 साल के अंदर ही
कितनी प्रगति हुई है, कितने विश्वविद्यालयों को अवसर प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर सबका इसमें समावेश हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप और यूजीसी के योजनाओं के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय को भी आमंत्रित कर रहे हैं हम लोग। यहाँ हमारे रक्षा के कुछ मित्र बैठे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग कैसे जुड़े हैं, यहाँ पर कैंपस खोले या यहाँ के विश्वविद्यालय से एमओयू करें, ये मात्र कोई व्यापार नहीं, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी दर्शन है उसका प्रतीक है। मित्रों, तो हम लोग अभी कॉन्क्लेव किया था, उसमें पूरे देश से बड़े बड़े विद्वानों ने भाग लिया, कुलाधिपति कुलपतियों ने भाग लिया और योजना बनाई। उसके निष्कर्ष निकले, उसके पूरी तैयार हुई कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे और पूरे विश्व को आमंत्रित किया है इस समिट में और उसके परिणाम हुए कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के में अब तक 74 निवेशकों ने हमको हमारे साथ एमओयू किए। 1,59,027 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं और इस सब से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, जहां शिक्षा को विकास होगा, शिक्षा को विस्तार मिलेगा, नया आसमान मिलेगा, वहीं 6.14 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन भी होगा। तो उत्तर प्रदेश में अपार संभावना है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में इन संभावनाओं को देखते हुए आप आएंगे, सरकार आपके लिए अपने द्वार खोले रखेगी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। Government Uttar Pradesh, please welcome him with a huge round of applause, ladies and gentlemen. के सत्र के अवसर पर मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, मंचासीन उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जी, मंच पर विराजमान प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी, मंचासीन माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा मंत्रीगण, आज के इस सेशन के तीनों स्पीकर माननीय मुख्यमंत्री जी के शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर डीपी सिंह जी, मंच पर विराजमान कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय। Getting these students should be constructed and private university plays very important role in this. The state sector universities, they are also doing the balancing act as far as the affordability of services given to the consumers or students who are not that much lucky to pay the price which private university is asking. So once on one side we have private university, on the other side we have balancing act by the state sector university, but both the universities are going to give the quality education, and I am very happy to announce that under the leadership of the Honorable Chief Minister and the High Education Minister, the NAC accreditation that is taking a very fast, rapid progress in the state, both in private